Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Yes, मैं चाहूंगा कि यार I'm very excited regarding the semi-finals of the Champions League which are coming up. Let's be honest, I have to be fair. अच्छा नहीं लग रहा मुझे as a Chelsea fan. अच्छा नहीं लग रहा Champions of Europe out of it. लेकिन we have to kind of accept it whatever it is and we have to celebrate जो है and looking forward to the game just as a footballing fan, and that is why we have today two Madridistas. I know Jayant is not on screen. He'll come. He'll join कुछ ही minute में. But first and foremost, obviously, we have Dhenuka back. Dhenuka, how are you doing? All excited? Hi, yeah, very excited and very nervous, but yeah, excited. Exactly. मतलब हाँ, that is the only thing that इस बार मैं nervous नहीं हूँ. Put it that way. Probably You I'm can just enjoy the trying to. game. Exactly, just as a football fan. No, neutral. I love watching kind of matches where मैं neutral look because of the fact that I'm nervous नहीं हूँ, right? But हाँ, Right. let me big up a few people. By the way, everyone, usual drill आपको पता है. Like कर दीजिए stream, take the poll as well. और हाँ, we'll be discussing not just about Madrid. Yes, आज Madrid perspective होगा of the Champions League first semi-final. लेकिन I think we'll also kind of touch upon Liverpool, Villareal. We'll do that in detail as well towards the latter part of the week. लेकिन हाँ, we'll be discussing transfers and that is क्या टाइमिंग है पता नहीं देने का कभी आती है कुछ ना कुछ होता है और we'll be discussing that for sure. Gantavya in the house. Well, thank you, Gantavya. Thank you very much. Thank you for that. And Kumar as well. Come on, City. So nice to actually have City fans in the chat as well. अच्छा लगेगा, like just to kind of get both opinions. But yes, by the way, हम City kind of perspective भी करेंगे कल. But for now, I think let's kind of focus on this side. Yes, football fusion. I can understand why Chelsea FC has turned up into wholesale market for other clubs. Yes, we'll exactly discuss that, Sushant. Exactly वही बात one another reason I'm not happy. I'll be very honest. ये पता नहीं कहाँ से आया अभी. Come on, भाई. मतलब let's ask footballing questions to begin. Then I'll come to that. Don't worry about that. We will see, bro. You surely have an upper hand first leg. Walker and Cancelo are not there. Okay, already banter शुरू हो गया है. Chat में हाला Madrid for Nikhil attendance present भैया तिलक. Yes, thank you. Jitesh bhai in the house as well. Thank you join करने के लिए Jitesh bhai. And as I said last time as well, आप welcome हो. Do ping me अगर आप आना चाहते हो. I'll be more than happy if you also come on the panel. Ronnie in the house. Sankalp, Suryansh, yes, Madrid Pandits also in the house. Well, क्या बोलूं यार मतलब कहाँ से शुरू करूं. I think honestly जैसे मैं बोला I have a couple of reasons not to be very happy as a Chelsea fan. Just kind of biased अभी के लिए. And no secrets, there are absolutely no secrets. I think probably the breaking news which has been going rounds is about this guy. And I know मतलब against Madrid, ironically he got the assist last season for Pulisic's goal. And this time आप देखिए थे मतलब second leg में क्या performance था. अलग ही level भाई. I don't know, like I don't know what to say Dhenuka. I'm like so pissed off right now. I'm like, I discussed yesterday with a lot of other people in the chat. Yeah. For me, it's kind of both, right? He's kind of played very safe, like how Hazard had played. That's maybe the right way of doing things. But at the same time, the timing of it. आज ही ये भी news आ रही कि we might get new owners in April itself. That is a possibility. So I don't know, मतलब it was always planned looks like. But Madrid have got a great player, as in no two ways about it. Again, आप comment करिए, people in the comment. Do let me know where do you see Rudiger kind of in world football when it comes to centre backs. But Dhenuka, coming to you and the Real Madrid team, कहाँ पर fit होता है 11 में? मतलब do you see any displacement of any current starters, or do you see him fitting in slowly and steadily? No, see, we definitely need. मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ. We definitely need to bolster our defense. ये season नहीं है, last season नहीं है. 3 seasons से this has been happening. A classic example is again the game we are going into now against Man City, right? We are struggling so with injuries and with so many things. So, uh, and the fact that we have Nacho, who's not well, he's just a backup defender, right? So Mm-hmm. having someone like Rudiger, who is a proper CB, he'll definitely start. I don't see him sitting on the bench at all. And the kind of salary he'll be drawing, I don't think he'll be sitting on the bench for that as well. So he'll Yeah. definitely start. And the thing is, as good as the Alaba Militao centre back pairing is, Alaba can also play left back. He has played left back in the past. Yeah, of So course. there is an option. They can always send Alaba to the left back. Mendy has been having a lot of injuries.
of late. This season, it has been a huge concern. And Mm-hmm. when Mendy comes back from an injury, he makes a lot of mistakes. He's not. We always talk about the fact that, oh, he's just come back from an injury. So and he puts up like very impressive performances, but then he is also very injury prone, and we definitely need. So I see that happening because Mendy is not guaranteed a start because Mm-hmm. of that, because of his injury, and also because he's relatively young in the pecking order. Mendy, we still had Marcelo until last Of season and the course. season before यार that. लेकिन रेनो का लास्ट सीजन की बात है मतलब when we played Mhm. Real Madrid मतलब we Hmm. were almost celebrating that Mendy might be missing one leg मतलब he is Yeah, that kind yeah, of a defender तो थोड़ा सा absolutely. strange लगा मुझे honestly speaking हाँ, but हाँ लेकिन वो इंजरीज आर ऑलवेज अ पार्ट एंड मैं बोलती हूँ रियल मैड्रिड के लिए द डिफेंसिव लाइन हमारा हमेशा से वी हैव स्ट्रगल्ड विद इंजरीज. सो ऐसा है ही नहीं कि वी विल हैव ऑल फोर फिट all the time. So this was like the farthest we could push, I think. And now see we are struggling again. So I see that as an option, and not everyone needs to. Mendy doesn't need to play every single game. He's still young, so he can still be benched. You can have Alaba move to the left, see how that plays out. But Rudiger, I think if he does come, then he will start. I think he'll be given a chance to he'll start, start and right it's absolutely great signing if it happens. exactly and here we welcome Jayant from TCSB Jayant भाई कैसे हो सब ठीक सब बढ़िया हाला मद्रीद एवरीवन एंड हेलो टू द पैनल. तो मैं ये वाली बात कहना चाहूंगा कि रूडिगर के ट्रांसफर में सब ये बात कर रहे हैं कि मेंडी को हटा के और आल्बा को लेफ्ट बैक खिलाओ और बीच में वो खिलाओ. लोग ये बात याद नहीं कर रहे कि मिलिटाओ इज एज ऑलवेज प्लेड लाइक द राइट बैक. ही इज अ राइट फुटेड सेंटर बैक और वो राइट बैक की तरह खेला भी है. तो दैट्स आल्सो एन ऑप्शन कि हम मिलिटाओ को राइट बैक खिलाएं क्योंकि हमारी लेफ्ट बैक से ज्यादा सिचुएशन अगर आप देखो तो राइट बैक पे खराब है. तो कारवाल की जगह यू पुट, क्योंकि कारवाल मोस्ट ऑफ द सीजन भी गायब रहता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हम मिलिटाओ को भी राइट बैक की पोजीशन में खिला के एंड रूडिगर आल्बा इन द सेंटर एंड मेंडी. तो हाउ अबाउट दैट एज अ बैक फोर ऑफ रियल मैड्रिड? चलो कोई नहीं तो दैट गिव्स मल्टीपल मी बूस्ट. ऑप्शंस मिल रहे हैं बेसिकली हाँ एंड Exactly. दैट फॉर Madridistas it's great लेकिन हाँ सूरज हैज अ पॉइंट अबाउट द लीडरशिप एंड द फैक्ट दैट वो कामनेस है compared to basically जो current Madrid back four है maybe I think वो Chelsea में है with Thiago Silva so that's a great point by सूरज लेकिन again I think Rudiger वही है over the years वो last couple of years आप देखे हो कि he can also bring that वो एक लाता है element in terms of aggression I think that is something that he does it consciously ऐसा नहीं और कि वो he's always like that वो यार चीज हमारे पास एक पेपे हाँ. था. So we are not new to this. और yeah नहीं he's भैया half of वो Pepe चीज दिखी भी, वो चीज हमें चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड के सेकंड लेग में दिखी कि रूडिगर ऑन हिज डे उसकी उस दिन तो मेंटालिटी भी उसकी टॉप नॉच थी. उसकी प्रेजेंस आप डिफेंसिवली कहो ऑफेंसिवली कहो सब कुछ टॉप नॉच था. तो अगर उस मेंटालिटी के साथ वो हर मैच खेले तो ही इज अ बीस्ट काइंड ऑफ अ प्लेयर. और अभी जो बात हो रही है मतलब मेरे को वो था कि ये ही इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर रियल मैड्रिड, इज अ क्विक फिक्स बेसिकली. लेकिन अब जो बात आ रही है कि वो एक लॉन्ग टर्म साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे मैं आई एम थोड़ा वो कि भाई क्या मतलब इसका फायदा है या नहीं. क्योंकि डाउन दियर मेरे को ये लगता है कि वो फिर बेंच पे बैठेगा क्योंकि मेरे ख्याल से मिलिटाओ के साथ कोई एक नया सेंटर बैक ही आना चाहिए. क्योंकि रूडिगर आई डोंट थिंक कि वो 4 साल रियल मैड्रिड को ऑन दैट लेवल दे सकता है. 2 years आई कैन से जिस हिसाब से वो भी खेल रहा है. बट आई डोंट थिंक कि 4 years एट टॉप लेवल रूडिगर खेलेगा मेरे ख्याल से. Yeah, well, again, lot of opinions will have chat में भी और by the way, again, people do like the stream and do check out TCSB as well, very good channel. लेकिन हाँ, मैं बोलना चाहूँगा यार मतलब we'll be discussing obviously the main game, but this is something of a shock to me. I have to say मतलब इतना जल्दी मैं anticipate नहीं किया था. I thought वो थोड़ा wait करेगा and that's why हम discuss कर रहे हैं and it is breaking news. Let's be honest, along with obviously the match that we're waiting for. Plus, I think there's one more angle to it, as in the coaching, the managers, both Pep Guardiola versus Ancelotti. That's another level altogether. Can Rudiger fit in back four? मतलब वही है मतलब I think I'll ask this to Dhenuka again. Dhenuka like आपको नहीं लगता कि यार मतलब ऑफ कोर्स एक बैक फाइव वर्सेस है मतलब जर्मनी के लिए भी इज बीन बेटर व्हेन दे आर प्लेइंग बैक फाइव बट what is it that he'll bring different to Real Madrid? Is it just his pace because of which he can fit in a back four? Matlab, you think that it's absolutely no matlab, qualms at all? No, and also we, like he said, now we need that kind of beast mentality, and he can bully the players. And we don't have that. Militao is there, but he's nowhere close to that level yet. He's very young, and he is just
only started sort of blossoming for Real Madrid. अभी तो काफी time है, तो having a Rudiger who's established that way, obviously it'll bring a lot of, it'll help in that aspect a lot. He's aggressive, he shows that aggression which we have kind of missed since Ramos, but here we have an Alaba, so sort of making up for that a little bit. I would say Alaba and Militao together मिलके थोड़ा बहुत कर रहे हैं, but Rudiger, I think in that aspect, and you saw in that second leg versus Real Madrid, right? Like he was Yeah. spot on that day. Like he did everything right. It was almost like an audition for his Real Madrid for career. his transfer now, to Real Madrid. So Yeah, और भैया यहाँ मतलब पर पूरा मैच Please, भी Jan. मत देखो, आप सिर्फ एक ग्लिम्स देखो, वो जो 10-12 सेकंड की जिसमें फ्रेश रोड्रिगो आता है और रूडिगर लिटरली स्लिप्ड, और उसके बाद वो खड़े होके देन ही रिकवर्स और फिर वो रोड्रिगो से बॉल जीत जाता है. तो दैट 10 सेकंड क्लिप शोज कि उस भाई में कितना पैशन है एंड व्हाट रूडिगर कैन डू. intensity, yes. हाँ, इंटेंसिटी के साथ वो खेल रहे हैं. तो वी वांट प्लेयर्स हु कैन प्ले फॉर दिस बैच विद दैट मेंटालिटी, एंड आई फील रूडिगर इज दैट. अरे अब अभी बैच भी आ गया. रूडिगर ऑलरेडी थिंकिंग क्या मैड्रिड का हो गया पूरा. लेकिन एनीवे मतलब आई कैन एग्री. अब मतलब तो ही दैट रोमानो काइंड बाबा ऑफ ने भी कह कैरेक्टर. दिया, अब तो रोमानो अरे बाबा भाई. ने भी कह दिया कि हाँ वही. वही है. अच्छा मैं वही पढ़ रहा था टू बी ऑनेस्ट कि यार बेसिकली इट्स अ 4-year deal looks like it, as Jayant has said, 11 million a year. I think that was the difference maker. 230,000 pounds per week हम कर रहे थे, but we were not giving that sign on fee. I don't know whether वो excuse है whatever, like I said Dhenuka earlier, like probably it was always in his mind, right? लेकिन Dhenuka, like again world football में आज के दिन में if you have to say who's the best centre back who was available, probably he was the one, right? As in probably that was the number one choice for Madrid, right? एक और है आप ही के यहाँ से अगर मिलने के लिए है तो. अरे भाई look at these people. This is like मतलब literally मतलब शॉप ओपन शॉप पे लगा हुआ है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल बारसा फैंस और टू मच, मतलब बारसा जा रहे हैं सब लोग, अभी मैड्रिड जा रहे हैं. मतलब हाँ क्वाइट पॉसिबल. लेकिन बट हाँ आपने बारसा क्रिस्टियनसन भेजा है तो चेल्सी इज डूइंग बोथ द थिंग्स फॉर अस. मैं तो ये कहूंगा कि क्रिस्टियनसन जैसे खेल रहा है, they are giving Christensen to Barcelona and they are giving Rudiger to us. Thank you Chelsea for that. But Very, very remember happy. again, मैं थोड़ा दूंगा यहाँ पर just a warning that Rudiger has had his moments where he was really not pleasing Chelsea fans also who have in the past. ये तो बात ऐसा नहीं है कि मतलब recency bias होता है. Last 2 years absolutely fantastic. लेकिन हाँ there have been times. लेकिन again coming to that, because Dhenuka and Jayant as well, like आप लोग Spanish football में closely follow करते हो. Jules Koundé, Chelsea has been very very strongly linked for a very good while. Almost हो गया था last time, लेकिन for whatever reason नहीं हुआ था. Do you see again? अभी तो मतलब he's far, but just watching Spanish football week in week out, Dhenuka, do you see that Jules Koundé can be that that person for Chelsea? Does he have that? I know not Rudiger element, but at least in terms of the ability. Absolutely. I mean, I don't know about the recency thing, but he's quality. He's really good, and the fact that you're losing your centre back now, one of your centre backs, so उसके लिए he is absolutely a worthy replacement, I would think. Yeah, What about you, Jen? भैया कुंदे की अगर बात करें तो somehow after that France versus स्विट्जरलैंड वाला मैच जिसमें वो राइट बैक खेल रहा था, मेरे को उस बंदे से मन ही हट गया. मतलब उस बंदे ने मैं तेरे साथ हूँ भाई, मैं तेरे साथ हूँ एग्जैक्टली. लिटरली मैं कुंदे मेरे ख्याल से नेशनल नहीं, और सिविया के लिए भी खेलो तो आपको जो एक कमांडर चाहिए ना. आप जैसे 2-0 जीत रही थी सिविया हमसे, ठीक है, और फिर उसके बाद से दे कंसीडर्ड 3 goals इन द सेकंड हाफ. तो उसमें अगर आप वो बोलो ना कि कुंदे में एक वो क्या कहते हैं उसको, कैप्टनसी टाइप कुछ मटेरियल है, या फिर वो दूसरे बंदों को वो कर पाए, मोटिवेट कर पाए, वो वाली चीज नहीं है. बीइंग की इतना हाइप है उस कुंदे के ऊपर, तो आई वांट हिम टू शो दैट एग्रेशन एज अ डिफेंडर कि भाई कम ऑन लेट्स वी कैन डू इट. वी कैन. 1 गोल पड़ा, 2 गोल पड़ा, ऑल द डिफेंडर्स मतलब कार्लोस आल्सो हिज सेंटर बैक पेयरिंग हेड्स डाउन थे उनके. एंड अगर रियल मैड्रिड चाहती तो दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड 4th and 5th गोल आराम से. तो वही वाले ये कुछ मैचेस होते हैं. आप बार्सिलोना मैच भी देख लो, दे प्लेड ब्रिलियंटली टिल 80th मिनट, और उसके बाद पेड्री वाला वो गोल खाया, पूरी की पूरी टीम उसने पेड्री भाई ने काट दी थी. तो वही एक कुछ छोटे मूवमेंट होते हैं जिसमें मेरे को नहीं लगता कि वो उस लेवल का प्लेयर, आप समझ रहे हो, जो एक थियागो सिल्वा हो गया, या फिर हमारे में तो इतने पेपे, सर्जियो रेमोस, ये वाले का डिफेंडर नहीं है. आई डोंट थिंक कि चेल्सी में जाके ही विल ब्लॉसम.
I hope he proves me wrong someday. मतलब मेरे को क्या prove, but I hope he मतलब exactly he same thing. As a Chelsea fan, Jayant is sounding like a proper Chelsea fan आज, proper. I like that Jayant. आपको But remove का see, option if नहीं मिलेगा not यहाँ पे. him, then who would you have वहाँ पे? That is my thing. See, we're talking about a possible Rudiger replacement, right? मतलब that is So, my thing, Dhenuka. Why did we let Rudiger go at yeah. any cost? I know we don't have an owner. It's No, not our say. correct. लेकिन Yeah. मतलब there Huh, is that मतलब lot of that see, ideally for you guys, that would have been he wouldn't have left, or he wouldn't have wanted to leave, and things would have carried on the way they are. But considering that is not happening, there are very few people जो एकदम proper replacement अगर आपको चाहिए, who will fit in the team like this and seamlessly blend, वो तो मतलब you'll never know, right? Like until this guy moves over. I think he's one of the few replacements possible. So I was thinking of it only from that angle. It's next to right. impossible to get a very similar character come in and sort of fit in the team that way for Chelsea. एकदम अच्छा भाई यहाँ पे क्विक शाउट आउट फॉर चेल्सी पर्सपेक्टिव बिगर ब्रो थैंक्स अ लॉट मींस अ लॉट बट एब्सोल्युटली I'm sure Chelsea perspective like me not really great doing this stream in terms of not just as a Chelsea fan but like as a football fan we have to move on. Absolutely great channel, do check it out people, but target right now is what we have, what 100 votes in the poll already. Hopefully we'll get that number of likes very soon so that we hum double kar paye number of people are coming in, because yes, we are going to discuss the game in detail, and I am as always starting the questions. बीच में questions भी लूंगा, so do put in your questions as much as possible. I will take it as much as possible, right, for sure. But again, thanks a lot for people joining and liking stream. But हाँ पता नहीं सैलरी की बात कर लेते थोड़ा बहुत, because I know that Chelsea के लिए Marina दीदी is like too much when it comes to salary, बहुत मतलब penny pinching kind of thing, and that's probably right in terms of parity. Yeah. लेकिन जयंत मतलब आइडिया है कुछ रियल मैड्रिड में, मतलब where will Rudiger stand in terms of salary, मतलब in terms of parity with the rest of the players? Is it not an issue for Real Madrid? I know it's Real Madrid, but still. It's not at all an issue because, as we all know, Gareth Bale, one of the highest paid player in Real Madrid team right now, Golf is खेल रहा going. है. Isco is leaving. Marcelo is leaving. Maybe Jovic as well. Maybe Hazard will go on loan और उसका कुछ परसेंटेज हम देंगे या फिर Hazard पूरा चल जाए. और इस सीजन पे आप देखो तो जो सैलरी कैप रियल मैड्रिड का है वो वे हायर है देन दी अदर टीम्स. ओके, एंड इस साल रियल मैड्रिड, पिछले साल स्टेडियम में फैंस भी नहीं आते थे. इस साल तो उस साल भी पेरेस भाई ने नेट प्रॉफिट कमा लिया था, तो इस साल तो फैंस भी आए. तो और पिछले साल हम वर द ओनली ला लीगा टीम जो पहुंची थी और सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, तो वहां से भी हमें पैसा है. तो इस टाइम पे रियल मैड्रिड का जो सैलरी कैप होने वाला है इस अगले सीजन का भी, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है. और एम्बापे का जो मतलब काफी ह्यूज अमाउंट जो चारे प्लेयर्स जा रहे हैं उसका काफी अमाउंट एम्बापे ले लेगा. बट स्टिल जो अमाउंट बच रहा है उस वी कैन साइन 2 और 3 प्लेयर्स. एक उसमें से रूडिगर हो ही गया, तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगी रियल मैड्रिड को. थैंक्स टू पापा पेरेज, यू आर द बेस्ट. नहीं अभी ब्रेक ले लो यार, पापा पेरेस को बोला थोड़ा सा ब्रेक ले लो. रीस जेम्स अभी तो नहीं आने वाला. नहीं अच्छा. रीस जेम्स ना है भैया, लेकिन चुआमेनी है थोड़ा सा मतलब सलाद बन गया, उसके ऊपर मसाला डल जाएगा तो मजा आ जाता है. See, we've not had a good transfer, okay, since हाँ. last time तो कोई नहीं था. Hazard के बाद हमारा कोई ऐसा big profile signing, कुछ एक splash signing नहीं हुआ है. एम्बापे के चक्कर में हमारा कुछ भी नहीं हुआ है. Camavinga was one of the golden boys of Europe. What are you talking? No, but now he is proven exactly, and also now he has proven himself to be that, and he was not a splash signing. वो आपको jerseys नहीं बेचने वाला. He is not a Galactico signing, right? Both Alaba and Camavinga worked out really well for us, but they were not those big profile signings at all. The way like the ones you associate with Madrid, like an Mbappe or a Haaland or whatever. भैया वही वाली बात है ना, हम बचपन से गुल्लक में पैसे डालते रहते हैं, तो अब वो फोड़ने का दिन आ गया है. वो गुल्लक फोड़ने का दिन आ गया और वही ट्रांसफर है. Thank you, Drog Baba. Thank you. Means a lot. Yes. Congratulations to TCSB, and again people to check it out. And again, भाई, again do check out Drog Baba. By chance आपने नहीं किया है, please do check out Drog Baba as a shout out. And मैं देख रहा हूँ अभी तक यार भाई इतने लोग देख रहे हैं. I don't know, likes नहीं बढ़ रहे. Get the likes up, certainly helps. So that we have more people joining the stream. लेकिन quickly in terms of money हम बात कर रहे थे. So I think मतलब 2 transfer windows में you have Camavinga, Alaba, Mbappe potentially you'll get. Again हम बात करेंगे डिटेल में towards the end. I know that there might be some twist there, or Rudiger of course, right? That will be what 30-35 million.
and that is madness. Dhenuka, who's that 2 person? free signings, right? Rudiger is free and Exactly. Mbappe also, if he does come. So, Who's so yeah, responsible for this? Do you think? Who would you give credit in Real Madrid backroom stuff? for the कौन signings. कर रहा है ऐसा मतलब टाइमिंग कौन कर रहा है कि यार वी आर गेटिंग ऑल द फ्री kind of best players out there? Is it basically coming directly from Papa Perez, or you have like just your scouting? I think it's just scouting, because if you look at the kind of if you look at the team that has actually capitalized on this whole thing, it is Barca. Last Hmm. transfer season, including the winter transfers, उनके यहाँ पे एक कोई free agent हुआ नहीं कि they have gone ahead and signed them. How many did they sign? And they didn't even have the clearance to sort of register them. फिर भी they went ahead and they signed people on a record basis, and look, it worked out really well for them. उनका Aubameyang, who came in the winter, and all of their signings have worked out really well for them. Adama Traore. So ये I देखो, think if you they want were you the can take a ones who. nacho in return. मतलब क्या समझा क्या भाई शिवम? कोई नहीं अपना भी दिन तो आएगा. तो वही नहीं तो यार, मुझे तो ऐसे लगता है कि इनफैक्ट वी हैव नॉट बीन कैपिटलाइजिंग ऑन थिंग्स, सो इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स, राइट? वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ Madrid attracts players because of its name, because of the club itself. तो उसके चक्कर में एक होता है कि like people have this dream that they want to play for a Madrid, or you know they want to play for Barca, जैसे they have that dream club they want to play for. उस चक्कर में एक वो होता है because of the name thing, and we have not been making signings as such based on, you know, हमारा कहाँ क्या होने वाला है. We lost our 2 CBs last season, but we didn't seem to be in a rush to sign anyone, even replace those two. We only signed one Alaba, and so I would in fact say we need to be more aggressive. What ठंडे है यार. We got one Camavinga, luckily that worked out, but all of them otherwise, Militao, Mendy, everyone has been around for some time, and we've offloaded players and not signed anyone in return. And even now we are not linked with as many people who are leaving on a net basis now. So that really worries me, क्योंकि फिर यही problem होगा squad depth का. So I think that Real Madrid should be a little more aggressive and go for players. Chouameni, what are we doing? We need to. अभी फॉर्म solid. ये दिख रहा है, you know, that अरे अभी Madrid से kind अभी of element is coming through, you know, अभी आ रहा है finally वो. I used to तेरे को hear this so much over the years, मतलब last 2 साल से थोड़ा सा ठंडा हो गया था, maybe because of COVID, I don't know, मतलब maybe because of money not being there, but I can seriously see that confidence, and of course on the pitch people have done it, man. And let's give it to Real Madrid, because you have done it this season, at least in La Liga you are the best, and I know 1 point away, I think 8 point मिले, I think against Espanyol is what you Yeah. guys are playing, and I think you will be champions. और मैं इस चीज के लिए मतलब लाइव बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, सेविया फैंस को थैंक्स कहना चाहूंगा, टीम को तीनों टीम को थैंक्स कहना चाहूंगा, बिकॉज नाउ वी हैव द लिबर्टी टू रेस्ट आवर प्लेयर्स बिफोर द सेकंड लेग ऑफ मैनचेस्टर सिटी. हमारे पास ये लग्जरी नहीं होती. आफ्टर द एल क्लासिको एवरीबॉडी थॉट कि अब तो टाइटल रेस सीरियस होने वाली है, बट इट वेंट अदर वे राउंड, और हम तो मतलब 1 पॉइंट की दूर पे. हमने कुछ ऐसा नहीं करा. वी हैव नॉट डन समथिंग आउटरेजियस. मतलब हमने गलतियां करी, उसके बाद कमबैक भी करे, वो बात है, लेकिन सामने वाले टीम्स ने गिवन अस द लिबर्टी की. आप देखो गिटाफे वाले मैच, इससे पिछले वाले मैच में ओसासुना 3-1, उसमें मॉड्रिच टीम में भी नहीं था और इतने सारे प्लेयर्स को रेस्ट करने का मौका मिला. इट्स अ बिग थैंक यू टू ऑल द राइवल फैंस एंड द टीम. थैंक यू वेरी मच. Anyway, होता है, मतलब आएगा, अपना टाइम जाएगा, लेकिन गुड मतलब गुड टू सी दैट, यू नो, गुड टू सी दैट, बिकॉज अगेन ला लीगा फॉर कपल ऑफ इयर्स ऐसे लग नहीं रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, स्पेशली जो यू नो हुआ था वो द समर मेसी सागा एंड ऑल दोस थिंग्स. तो गुड टू सी बेसिकली, यू नो, दैट यू आर गेटिंग probably that kind of power again, right? As in, again, it's just about that competition जो मुझे अच्छा लगता है. That's why I love football. But again, if you get that point, Ancelotti, Dhenuka will be the first ever to win top 5 leagues in you know, Europe. That is something else. मतलब I don't know, अगर वो जीत जाता है by chance Dhenuka, let's actually, again, Real Madrid, what I'm going to say, you'll be very happy if you win the Champions League and of course the La Liga that you are, you know, imminently winning. Where would you place Ancelotti in, you know, La Liga managers for Real Madrid managers? Because a major double, not many, you know, have won, right? So where would you place him? Look, see, he is a fantastic manager, and like manager बनने के लिए तो there are so many aspects you need to look at, right? It's not just about tactics; it is also about man managing, how the dressing room is managed. There are so many aspects to it. So I think that and he has done this over a period of so many years. वो भी भूलना नहीं चाहिए हमने. So just like
so my rating for him compared to what he was earlier, या उसके the way he used to manage earlier versus what is happening now, if you were to look at, they would be two different things. So मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि now we are still in contention and all of these things are happening because of individual brilliance from players and less of see he's an excellent man manager and we should not sort of undermine that क्योंकि अगर dressing room में अशांति है between the players, there's no harmony, then it is all gone, it is down the drain, you will not win anything even if you have the best tactical manager around. So that is definitely not to be undermined at all. But I still think that a lot of credit this time also has to be given to the players themselves and to Pintus, who was like who's come back as our fitness expert, because the kind of sort of schedule these guys have been subjected to, especially the players in their 30s, in the midfield and Benzema and all of these players, the kind of intensity they've been playing with, the number of games they have played, it has been crazy. And that wouldn't have been, we would have been seeing a completely different story had these people sort of crumbled like it happened in Ancelotti's earlier era with Real Madrid. हम लोग आज ये बात नहीं कर रहे होते फिर. Then it would have been a very different discussion. So I would say that I would rate him greatly as a man manager. I would rate him very greatly as a, like, I think a little late he sort of woke up, and this whole rotation thing now he is doing, I get it, and credit where it's due. The substitutions have been spot on in the last few matches that we have seen, but I still think that it was, we could have been a little more, he could have been a little more sort of ambitious with sort of rotating the players and giving the players a chance, the ones who are on the, what is the point of having a star-studded bench and we are paying for like Gareth Bale's golf, and even if not Gareth Bale, Hazard, right? He seemed to be keen to be on the field. So yeah, so like I said, I always say that we don't know what goes on behind the scenes, so we should, मैं इतना ज़्यादा इस पे नहीं बोलती हूँ कि क्यों किसी को कुछ खिलाया नहीं, but ये सब मामले में I still have that thing with Ancelotti that he could have like Marin now, right? Or asking a Jovic to play or someone to play. If you don't give them a chance, you cannot criticize them saying that they are not performing well in a big game or in a big match. So उस aspect में I would still think that Carlo is still a little old school, so he was like stubborn till the very end. But credit where it's due. Last few matches में he has been making changes, he's been making rotations that are substitutions that are spot on. So yeah, definitely one of the all-time greats for Real Madrid. No yeah about that, and especially when it comes to man managing. Yeah, मतलब मैं तो यार I am a Carlo fan, because of Chelsea connection. लेकिन हाँ, सूरज big up यार, part of TCSB very much. Yes, हम करेंगे बात उस पर भी, लेकिन again no pun intended यहाँ पर, बारसा lost again. Xavi losing his 7th game. अब मैं कहीं read कर रहा था कि basically Zidane by the time he had lost his 7th game, he had actually won about 7 to 8 trophies with Real Madrid. I don't know how true it is. I was reading that, so I asked Jayant, क्या लगता है भाई, Zidane? I know that the way it ended again second time wasn't ideal, लेकिन where do you see his future? मतलब he is one of the underrated managers मेरे लिए for sure in world football. I know he's taking his own time खुद ही, he's being very selective, लेकिन कहाँ देखते हो Zidane को? Which club is ideal, having managed Madrid? मेरे ख्याल से तो वो फ्रेंच नेशनल टीम के लिए वेट कर रहा है मेरे ख्याल से तो, and that's his destination after the World Cup. I guess whatever happens, Deschamps will go and Zidane will come, और क्योंकि I don't want Zidane to go to PSG and Mbappe to stay. That's another reason. और अभी तक अगर ज्वाइन करना होता तो वो पिछले सीजन ही कर लेता, मतलब जब भी पोचेटिनो का सीन हुआ था तभी Zidane आ जाता. He was free at that time as well, and he's a great legend of France भी, तो everybody will respect, और उसकी जो legacy उसने as a manager भी बना रखी है. Hats off to Zidane for that, जो उसने हमें 3 जिताया, whatever the circumstances and everything was. जब वो आया था 6 महीने में उसने हमें चैंपियंस लीग जिता दिया था, तो hats off to Zidane. तो French that's not spoken about enough. I really genuinely believe that it's not spoken about enough. और अगर अंकित भाई एंसेलोटी की बात करो तो मतलब मेरे लिए जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, probably the best manager I have seen, because first of all thank you Ancelotti, क्योंकि ला डेसिमा का कर्स
एक कर्स चल रहा था हमारे साथ और उसने ला डेसिमा फिर हमें जिता के दिया, सबसे बड़ी चीज है। और इस सीजन के आप स्टार्ट में देखो, विदाउट सेंटर बैक हमारे 2 मेन सेंटर बैक चले गए, जिडानी लेफ्ट विद आफ्टर राइटिंग अ लेटर पेरिस के लिए और पब्लिकली वो, तो द एटमॉस्फेयर वाज वेरी वेरी नेगेटिव इन द रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम कह लो या फैंस का पेरिस की तरफ कह लो, क्योंकि आपने 2 अपने ऐसे बड़े बड़े लेजेंड को जाने दिया। रेमोस ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि आई डिड नॉट न्यू अबाउट द एक्सपायरेशन डेट था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कब तक साइन कर सकता हूँ, तो द एटमॉस्फेयर वाज वेरी वेरी नेगेटिव। और उस टाइम पे वी नीडेड अ मैनेजर, एंसेलोटी अपना क्लब छोड़ के आया, ही डिड अ वेरी बिग थिंग फॉर रियल मैड्रिड, तो उसके लिए भी हैट्स ऑफ। एंड उसके बाद द वे ही हैज अनलीश्ड विनीशियस जूनियर और अभी फिर रोड्रिगो, बूम 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 होने वाला है, मैं तो कह रहा हूँ, मतलब अब तक हो ही रहा है और भी होता रहेगा। तो उसके लिए एंसेलोटी की थैंक यू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगता था जब इस सीजन पे पीपल क्रिटिसाइज एंसेलोटी अ लॉट, मतलब हाँ सब्स्टिट्यूशंस पे इट्स फेयर इनफ, बट उसके बाद रिजल्ट्स पे जब लोग बोलते थे तो काफी बेकार लगता था, क्योंकि तुम कहाँ थे और वो तुम्हें कहाँ लेके आ गया वो लोगों ने नहीं या देखा। मतलब जजिंग एंचेलोटी एट दिस पॉइंट इन हिज करियर, जो लोग आराम से ना हाँ बुरिया बिस्तर बंद करके बैठ जाते हैं, दैट्स दैट इज व्हाट एंचेलोटी, टू रेस्पेक्ट मैन, आई मीन रेस्पेक्ट फॉर द गाय। और रिस्पेक्ट। अभी भी मतलब वो एक्सप्रेशन ही नहीं देता, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, ओनली एंचेलोटी कैन डू, मतलब ही डजंट गिव He एनी did though. एक्सप्रेशंस, ओनली आईब्रो eyebrows. आईब्रो आईब्रो So see the match against Sevilla. मतलब for Carlo to act like that, मतलब आपको फिर सोचना चाहिए कि how much like that match moved him, because Exactly. he didn't even after the 92-40, the life changing decima moment, he was still like shant and whatever, Correct, like correct. everyone is going crazy. And अभी भी कोई भी मैच ले लो, he is very calm, he is just like happy popping his mints. But ये वाले सिविया के मैच में, like you saw him also show that kind of passion and aggression, क्योंकि like it means so much to him, that comeback I think meant so much to him, and I would certainly say that was probably the match of the season in the league for Yeah. him. Okay. By the वो way, we मिलता have से over दीजिए। 100 people watching. Quickly again, everyone, yeah, thumbs up दबा दीजिए. Just press of a button and do check out TCSB as well. बहुत अच्छा channel है, trust me. They just crossed 1K as well, and hopefully we also get over 2.5K by the end of this month. That was the target. Let's get us over 2.5K Come on by boys this and month. girls, let's do Let's this. get it. Absolutely. But a lot of questions. हाँ, मैं start कर रहा हूँ, and a couple of them मैं ले लिया already. मैं लेने वाला हूँ. Don't worry about that. We'll come to that, because yeah, we are almost half an hour through the stream. We haven't started even talking about the match, which is why we are actually here. So let's actually quickly start that, because yes, it is obviously a big night. Tuesday night is going to be big night, and again it pains me to say it, but it's Man City versus Real Madrid. Chelsea is nowhere there. I have to kind of admit, and that is what the players need to know about our squad. But congratulations to both the teams. Real Madrid 13-time champions, City haven't won. Great kind of motivation for City there. But you cannot take them lightly at all. जो कर रहे हैं इस season, but Cancelo is missing for City. He is the person, probably I would say, arguably player of the season almost. That's how good it's been for City. Na? Matlab, that kind of fullback position, which is very very important for Pep Guardiola. So because of the fact that Dhenuka, he starts a lot of times at left back for City, and we have spoken on multiple streams about the right winger for Madrid. Last 2-3 हफ्तों में जो है, I'm seeing Rodrigo being a different animal. Like, he is awesome. Rodrigo has been awesome. Not just that, even Asensio, the one that we kind of criticized a lot, like he scored. Vasquez also scored. Well, what would you want? Vasquez kind of brings the wing play plus the defensive mentality, and he can get in a goal, because you want probably a goal as well, considering Man City's defensive record. But Cancelo not being there, Zinchenko will probably play. वो end थोड़ा सा use करना पड़ेगा नहीं Madrid को first leg में? नहीं, वो तो डेफिनेटली यूज करना ही पड़ेगा, बट स्टिल डिस्पाइट ऑल दिस हमारे यहाँ पे भी we are missing Alaba, we are missing players as well. We are missing, I think, Okay, is he out? Like, is he out for out? Like, proper? Yeah, I think he's out. Yeah, last I saw he was out. Yeah, unless they pull something out of the bag now, but so far he's out. Not Alaba is not. So anyway, you're please on continue. mute. No, he's saying something, so I thought he was on mute. Sorry. Jayant is saying something. I think Jayant is on mute. Yeah, he's on mute. That's what I was. Jayant सुन रहा नहीं है. मतलब maybe you might want to come back. नहीं सुन रहा. Anyway, so Jayant try coming back. लेकिन हाँ, Dhenuka. So who's your right winger? Simply put.
So yeah. So I would still say start Valverde. I would still say that because I think Hello. Rodrigo as a super sub. Yeah, we can hear you now. Yes, yes. So I still think that when things go south, Rodrigo is really good as a super sub, and he can Mhm. come on, and then we can actually change Valverde's position accordingly, like how we've done in multiple games. And he sort of plays like that. Fourth midfielder, but also like moves up and down the whole time, so that it's so you get it because you do need, again, like I keep saying, right, Carvajal, you need to bolster Carvajal over there because otherwise we are done. And if we don't have Carvajal playing there, because who knows what is going to happen. Mendy is out for sure. Okay, so Mendy is he is back in training, but I don't know if he's going to be playing because they all You know what? is he I am playing? reading that potentially दोनों ही fit है. That's what I am reading. मैं But ये कह again, रहा हूँ भैया कि हाँ, 23 मैन स्क्वाड में तो सबको लेके गए. मेंडी इज फिट, जितना मैंने पढ़ा है got it. लेटेस्ट मेंडी इज फिट एंड ही विल प्ले. देयर इज डाउट ऑन कैज़मीरो एंड आल्बा, और आल्बा Yes, के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा कम है, एंड दे विल मेक अ लास्ट मिनट कॉल ऑन आल्बा एंड कैज़मीरो एज Okay. वेल. correct. इन दोनों पे लास्ट मिनट Casemiro कॉल है. as well. Yeah, Okay. Casemiro and Alaba are both not. Mendy, he just joined training. Okay, so I don't know. मेरा यही है कि Mendy जब इंजरी से वापस आता है, you don't know Mhm. what's going to happen over there. Militao has been having some nightmarish games. Okay, off late. मतलब वो है क्या चल रहा है पता नहीं है, but so my thing is कि the defense has to be spot on against these guys. So I would still say that play Valverde because you need him there on the right for to bolster that, and Rodrigo can come on as a super sub. I would think because if Casemiro is not playing, he is likely going to play either Cruz or Camavinga in that position. Interesting. So Acha, by the way, people यहाँ पर again, you are getting a lot of Madrid kind of perspective. Just a reminder, हम actually City perspective भी करने वाले. We are having one of like top YouTubers I think for Man City in the world. Like he is luckily coming on and we'll be actually doing Man City perspective as well. So check out that video tomorrow morning. But यहाँ पर बहुत ही interesting है because from what I read again, I think no one is on a suspension. The UEFA website says that. Nikhil, please correct me if I'm wrong. चेक करिए वापस यूएफा वेबसाइट में, वहां पर आज ही देखा मैंने. नो वन इज ऑन अ सस्पेंशन. ओनली थिंग इज कैंसेलो इज द पर्सन हु मिस कर रहा है ये वाले गेम, एंड आई थिंक नो वन इज ऑन अ येलो. सो इट्स क्लियर फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. लेकिन क्विकली मैं जैन का भी लूंगा यार. राइट विंगर जैन भैया कौन भैया खेल रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि उनके फुल बैक्स में काफी बड़ा डाउट होने वाला है. कैंसेलो सस्पेंडेड है एंड काइल वॉकर भी अभी डाउट है कि ही इज गोइंग टू प्ले और नॉट. काइल तो वॉकर डाउट है. करेक्ट. है ना, काइल वॉकर भी डाउट है. तो दिस इज आवर बेस्ट चांस टू किल देम ऑन, क्या कहते हैं, मैं काउंटर इसीलिए और बोल विंग रहा हूँ से. ना, वही तो दोनों वही तो मैं कह रहा हूँ अटैकर. दिस आर. हाँ, मैं हाँ. वही कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप पहला वाला मैच देखो ना, जो इन फर्स्ट लेग हम खेले थे मैनचेस्टर सिटी लास्ट टाइम, मैनचेस्टर वर्सेस रियल मैड्रिड, हम लोग ट्रांजिशन पे खेल रहे थे. वी वर डिफेंडिंग डीप और फिर हम उनको right. ट्रांजिशन में मार रहे थे, और वो मैच काफी इक्वल था. आप अगर जाके देखो 48% पोजीशन रियल मैड्रिड, 52% पोजीशन मैनचेस्टर सिटी. तो हम जो डिफेंड कर रहे थे उसमें वी वर विनिंग द बॉल एंड कीपिंग द बॉल, और काफी कंफर्टेबल थे टिल द 78th मिनट, जिसमें गैब्रियल, केविन डी ब्रुयना, दैट गाय चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द मैच. और इस मैच में जो पहले न्यूज थी तो उसमें कि काइल वॉकर इज इंजर्ड, जॉन स्टोन्स इज इंजर्ड, कैंसेलो नहीं खेलेगा. तो अगर आप देखो तो उनके सेंटर बैक पेयरिंग पक्की है. एक तरफ आप जिनचेंको खिला दो, अगली तरफ कौन खेलेगा? पेप गार्डियोला इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड कि शायद वी ट्राई गैब्रियल हिजूस, ही कैन प्ले ऑन द Yeah, राइट बैक yeah. पोजीशन, है ना. उसने ये बात भी कर दी. तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स आवर बेस्ट चांस टू किल देम ऑन, चार मतलब गोल विंग्स मार पे. के बंदा अभी हाँ राइट बैक मतलब खेलेगा. हाँ, उसके बाद वी कैन अफोर्ड मिस्टेक्स इन सैंटियागो बर्नाब्यू, जैसे मतलब चेल्सी वाली, सॉरी टू से, बट चेल्सी वाली लग्जरी हमारे पास हो जाएगी कि वी कैन मेक मिस्टेक्स. बट वही वाली बात है कि आल्बा और वो कैज़मीरो की इंजरी से ना मैच बहुत, मतलब फिर से सिटी के हाथ में चला गया, बिकॉज वी नीडेड कैज़मीरो की वो जो नॉटी गेम प्ले और जो डर्टी गेम प्ले है भाई की हमारी, वो हमें चाहिए ही चाहिए थी इन दिस मैच. बट फिर भी मैं कहूंगा कि वो रेफरी को भी मार देगा यार. बस हाँ, करे वो तो मैं उसको. कह दूंगा, वही कह रहा हूँ. बट फिर भी मैं कहूंगा कि वेलवार्दे को आप खिलाओ. और मैं कहूंगा कि अगर आप प्रेस करने का सोच रहे हो, रियल मैड्रिड हैव टू डिफेंड डीप, या फिर उनको हाई प्रेस करना है. दे कैन नॉट हैव अ, क्या कहते हैं, थिंग इन बिटवीन, जो चेल्सी के बीच में था
कि कब हाई लाइन भी खेल रहे थे, कभी डिफेंड डीप भी कर रहे थे, और मन किया तो प्रेस कर रहे थे। वो वाले में यू कैन नॉट अफोर्ड सच मिस्टेक्स जो हमने सिविया के अगेंस्ट करे, जो हमने पीएसजी के अगेंस्ट करे, जो हमने चेल्सी के अगेंस्ट करे। मैन सिटी विल किल अस। तो वही वाली बात है, वी हैव टू प्रिपेयर वेल कि या तो हम डीप डिफेंस कर रहे हैं, तो फिर आप, मैं कहूंगा आप क्रूज को भी खिलाओ, आप वेलवार्दे, क्रूज और मॉड्रिच का आप मिडफील्ड खेलो, और रॉड्रिगो, विनीशियस, बेंजेमा और विनीशियस, बिकॉज वी हैव टू हिट देम ऑन काउंटर। हमने बायर्न के साथ रियल मैड्रिड 2014 में जो खेला था ना, सेम गेम खेला था हमने, बेंजेमा, रोनाल्डो और बेल थे। मैं ये नहीं कह रहा कि विनीशियस और रॉड्रिगो, बेल, रोनाल्डो है, बट वो पेस है हमारे पास विंग पे, हमारे ट्रांजिशन पे हिट करने के लिए प्लेयर्स इन फॉर्म है, टचवुड, ठीक है, और हम डिफेंड कर सकते हैं। वी हैव टू सफर टुगेदर द होल गेम, और अपने ट्रांजिशन में उनको हिट देम ऑन काउंटर। अरे ये चीज तो मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं था। आई डोंट नो ईशान वेदर इट्स ट्रू, बट Aki might not be. I don't know. I've not read about it. लेकिन अगर वो नहीं यार, इमेजिन स्टोन्स 100% नहीं है, Aki 100% नहीं है, वॉकर 100% नहीं है, और रोबन डियास बीच में, और जिंचेंको, कैंसेलो, उनके पास 3 लोग हैं। खेलेंगे वो, देखो यार 2 लोग तो खेलेंगे, लेकिन इट्स अबाउट देम बीइंग 100% फिट और नॉट। वहीं पर जयंत इज हैविंग अ ग्रेट पॉइंट यहाँ पर, पीपल एंड अगेन लाइक आई थिंक राहुल, वेलकम टू द स्ट्रीम। Was waiting for you only. Certainly, hopefully likes ऊपर चल जाए. We should be having at least 250 likes. Come on, in the next 5 minutes, I would say. Let's have 250 likes. Let's get that, and even the subscribe target, and do check out TCSP as well. लेकिन again, थोड़ी सी फॉर्म की बात कर रहे थे quickly. 6 back-to-back away wins है Real Madrid के लिए. That is some record actually away. So I think again, first leg being in Manchester, it's not a bad thing at all, considering जो momentum है. Of course, in Champions League, beat Chelsea away. Not a great game for us. That was, I think, probably the game that stood out in recent times. Osasuna last, I think, midweek May 1-3. You guys beat with probably almost a B team, and then Sevilla, जो हुआ बीच में भाई, मतलब that was a different element altogether. That 2-3 probably should have been 2-4. मतलब that's how dominant you were in the last half an hour. So comeback kings Real Madrid have been brilliant. Man City on the other hand, they have had mixed form. हाँ, but you can say at the same time वो लिवरपूल के साथ खेले 2 बार, एथलेटिको के साथ 2 मैचेस थे, दो ऑन पेपर काइंड ऑफ मोर डिफिकल्ट ओवरऑल, लेकिन अगेन they have got 2 back-to-back wins. Recent 5-1 win, 1-0 Watford, who are battling relegation. Gabriel Jesus scored 4. Jesus is with them, they can say. But I don't know, कितना advantage है for Real Madrid not to play as a weekend with Dhenuka for you last weekend. Maybe that is the time when probably you guys are getting those injuries not there anymore. नहीं, but वही है ना, see, I honestly thought that even Benzema might have been rested for that game, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. He did play Benzema, and then you could see that there are always concerns about that also, right? Because even Benzema was like, he also looks like, yeah, he was limping, and he always looks like he is minutes away from one injury now, and कैसे भी मतलब limping towards the end of the season जैसे, and we lose him, we are like that. I don't even want to think about that scenario, so I won't go there. But मेरा यही है कि even Alaba का, I'm not sure. See, it looked like from the game that I saw, it looked like Alaba asked to be substituted. So it was not like a small knock or anything. He asked for a substitution. The only saving grace was he walked off on his own. But ये सोच के अगर चले ना, so it's always dicey when you get players back from an injury. You don't know वो लोग 100% खेलेंगे कि नहीं अपना, right? And the biggest difference also is that Man City still have like excellent squad depth. तो उनके यहाँ they can afford to have people who are injured coming back from injuries, not 100%. They still have a plan B. हमारे यहाँ पे प्लान Z है, प्लान B नहीं है, because it is like worst case scenario हमको play करना पड़ेगा, because we'd have no one. आप सोच के देखो ना, मतलब against Chelsea we are playing which again was like I don't know what stroke of what master stroke that was, but we played Carvajal as our center back because yeah, that's how it is. We still lost. Thanks for reminding, Dhenuka. We still lost. No, I'm just saying that it's I know, great that he didn't score. Chelsea didn't score at that time, but
But imagine having to, because you don't have people now, you're shuffling Backup, people left yeah. and you wouldn't have thought that, when you're in a do or die match, when you're literally trying to press Chelsea so that you don't defensively, you need to be super strong and not let Chelsea score. You have like Vasquez in the back, and then it's like one dysfunctional setup that is going on. Yeah. तो अच्छा, मुझे एक ऐसे ही सेकंड लगता में है. यहाँ पर ये बार-बार कमेंट आ रहा है निखिल भाई, अगेन आई एम सेइंग लाइक सादिक भाई ने भी करेक्ट कर दिया है वो, तो द थिंग इज नो वन इज ऑन अ येलो, दैट इज एक्चुअली द फैक्ट राइट नाउ, सो नो वन इज ऑन येलो, इट गेट्स क्लियर्ड एंड दैट इज व्हाट द न्यू रूल इज, सो UEFA ऑफिशियल वेबसाइट सेज दैट Oh, इट्स right, ओनली right. कैंसल और मिसिंग. यस प्लीज देनुका कंटिन्यू. Yeah, so मेरा यही है कि their right back, their defense का situation versus our defense का situation, it is still like, and I would not say this if all our defenders were 100% fit, then I would have been like, okay, this is a huge advantage going in या जो भी, but उनका squad depth sort of nullifies that, and ये Man City team है ना, is as good defensively as it is good in the midfield, as good as it is in the attack. It is a complete team, so you can't, even if your Real Madrid will have to play extremely well defensively. I think we have to have a brilliant defensive game. Of course, control the midfield, and attack is the only place where we can sort of pin all our hopes and count on some midfield magic. But other than that, I definitely think there is zero margin for error for Real Madrid defensively. That's why I'm harping on about the defense, even if we have like a more than the right ka situation, because I think we cannot afford any mistakes, and the kind of form and injury ridden form या फिर player form we are in, that is that's not inspiring confidence in me. let me But just say that. दैट इज द थिंग ना. हां यार जैन प्लीज. अंकित मैं ये कहूंगा, एक पॉजिटिव चीज जो चेल्सी वाले मैच से थोड़ी हो रही है कि टॉकिंग अबाउट कारवाल, कि कारवाल में थोड़ी वो डिफेंसिव जो उसकी मैच्योरिटी थी ना, वो मैं कहूंगा कि थोड़ी वापस आ गई है. आप देखो उसने सेंटर बैक खेल के भी चेल्सी के अगेंस्ट we won that. He We was won good. the. He was हाँ, really he was really really good. He got that confidence. I will not say offensively तो सही है वो बंदा, लेकिन डिफेंसिवली मैं कहूंगा कि उसमें वो मैच्योरिटी वापस से आ गई है. उसके बाद के भी मैच उठा के देख लो, he was superb. आप देखो सिविया के मैच में भी वो लेफ्ट बैक पे खेला था. फर्स्ट हाफ he was very poor, but Oh yes, when he correct. when he Good point. when he find key by his foot in the second half, he assists, produces right? two assists, और फिर डिफेंसिवली he was very good. तो I will say कि कारवाल की वो चीज, क्योंकि कारवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखो, मैं बार बार उस लास्ट वाले एनकाउंटर वर्सेस मैन सिटी के अगेंस्ट बार बार आता रहूंगा. 78th मिनट तक ही वाज वेरी वेरी नाइस मैं कहूंगा. उसके बाद केविन डी ब्रुयने ने उसके ऊपर से क्रॉस दिया, फिर उसने स्टर्लिंग को गिराया और हमें पेनल्टी मिली. तो कारवाल का अच्छा खेलना बहुत जरूरी है. और एक और चीज है कि हमने सेकंड लेग में वहां जाके गलती ये करी थी, वी वर प्लेइंग फ्रॉम द बैक, एंड मैनचेस्टर सिटी इज नॉट एट ऑल अ टीम जिसके साथ आप प्ले फ्रॉम द बैक यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं. वैसे मैं कहूंगा कि अब कर्तुआ हमारा ज्यादा कॉन्फिडेंट तो है प्ले फ्रॉम द बैक, अगर आप करने सोचना भी मत वैसे, लेकिन अगर पीछे बॉल आती है तो कर्तुआ हैड 55 टचेस अगेंस्ट चेल्सी इन द फर्स्ट लेग, व्हिच इज अ वाव स्टैट. तो मैं कहूंगा कि ऑल इन ऑल पूरी की पूरी साइड जो 2019 में मिली थी सिटी से वाज वेरी वेरी सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट द सेम साइड मैं कहूंगा. ऑलमोस्ट जो बस वेराने नहीं था, वेराने था और अब नहीं है, ऑलमोस्ट द सेम साइड, बट द क्वालिटी हैज ग्रोन वे मोर नाउ, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं. हां फॉर श्योर. गैरेथ बेल की तो बात की नहीं हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग. मैं कहता हूं गैरेथ बेल की बात करता हूं. In terms of playing, he's the only substitute for the Benzema in our squad right now, because Mariano is not in the 23-man lineup and Jovic भी नहीं है. तो Hazard is not you will fit. see Hazard individual Bale. training शुरू किया by the way, I heard. हाँ बहुत अच्छा Training लगा उसको शुरू देख के, किया. बहुत अच्छा लगा मुझे. तो मैं तो कहूँगा मुझे अच्छा लगा. but I don't think he's Correct. yeah. And people here देखो don't मैम, spam. आपको लगता है कि बहुत लोग spam कर रहे हैं. Come on. देखो मैम, आपको लगता है कि हजार्ड के days are over in Real Madrid? He's not going anywhere, उसने तो बोल दिया है. He's going to stick He's around. happy यार. Double. He potentially winning a double. और क्या चाहिए? मतलब that's what he would say. वो तो ठीक है, लेकिन उसने पिछली बार भी ला लीगा जब जीता था ना भैया, तो उसने कहा था कि हाँ हम लोग जीते, बट मैं एज अ इंडिविजुअल खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया. तो एक तो हजार्ड जब भी इंटरव्यू देता है ना, तो मेरे को ये लगता है वो दिल से दे रहा है, एंड आई वांट कि वो जो चीजें कहता है ना, इस सीजन की भी स्टार्ट में उसने कहा था कि इंजरीज आर पास्ट नाउ, आई विल प्रूव माय सेल्फ, और फिर इंजरीज. तो
मतलब नहीं लेकिन अभी 5 यार मैच भी दिख जाए ना, 5 मैच भी अच्छा खेलता हुआ देख लो उसे, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट प्लेयर यार, और ग्रेट प्लेयर, नहीं चाहे जो एब्सोल्युटली भी हो। मतलब टॉकिंग अबाउट ग्रेट प्लेयर्स आई थिंक अगेन हम बात करने वाले हैं बैलन डोर टॉक्स विल स्टार्ट इन अ कपल ऑफ मंथ्स क्योंकि कैलेंडर ईयर है इस बार. Karim Benzema, man, I mean, different element. Again, some bad memories coming as a Chelsea fan, लेकिन as a football fan, probably one of the best strikers that I've seen in recent times. I have no qualms वो बोलने के लिए, लेकिन the fact वो एक second में change कर सकता है game, he's that kind of a striker. I think 7 knockout goals this season. That is next level. That is probably like historical stuff almost, right? 7 knockout goals. I think it's one short of Lewandowski's 13 even this year. This year, the Champions League, probably he'll be the highest goal scorer. But City, on the other hand, they have conceded only 4 goals in knockout games. Very interesting. And Rodri, Bernardo, and if Walker plays, that kind of that side is kind of well protected. So on left hand side, I don't know. Like, would you want to get a left footer in Camavinga? Because yeah, we spoke about Valverde being there, but the fact that first leg में City might be missing a few players, maybe you need a little bit more creativity as well midfield with Dhenuka. Would you say that Camavinga probably will come on earlier compared to other games? I look, if you're going to start with Valverde on the right instead of Rodrigo, then you have to have Camavinga, right? Because that's he goes with the 4 Carlo goes with the 4-3, so you definitely need to get a Camavinga there to complete the. I'm assuming Casemiro is out, so then you only have Modric, Kroos, and Camavinga. But my thing is, at least for this season, what I've seen is his impact as a sub and the intensity that he brings to the game. It is more important when he comes on as a sub, and also the fact that again we don't have that bench strength, right? So what happens if he starts? And if all our players start, if Rodrigo starts, and then things are not going according to plan, you don't have an impact sub. You don't have a plan B then. So for me, I'd rather, because you cannot expect Kroos to come in late and change the game. वो नहीं होगा. So there, I think you need a Camavinga, or there you need a Rodrigo. So that is the only reason I'm saying that uh, they are more impactful as subs, when as you have seen when they come on in all the games recently. Yeah, And yeah, that's my logic for starting the regular midfield, because we don't have. लेकिन Okay, so अभी एक सेकंड जयंत तो यार people again I am watching here again let me not go as a broken record यार clearly बोलो I am seeing 350 votes being there लेकिन आधे भी नहीं है likes come on man, it's not fair. Let's put up the likes, thumbs up button है एक बार, just press that thumbs up button, that will certainly help. और यहाँ पर सागर ने कमेंट भी किया था, इसलिए क्वेश्चन है बाय द वे सागर, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, हाँ मे बी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बट certainly I think the differentiating factor in the game will be Real Madrid's beast mentality. Benzema is playing on a whole different level. 100% agree. Camavinga and Rodri will again be key players, because yeah, Rodrigo जो कर रहा है, what he's done, that impact kind of sub, or Camavinga, like Dhenuka said, kind of he changes something. वो एक different element लाता है when he comes on, and that's the whole point. Like they can manage the game better compared to previous year. That is something I'm clearly seeing in Real Madrid. हाँ, Jayant, please. मैं वही कह रहा था भैया कि बहुत सही बात है कि वो कामाविंगा वाला पॉइंट बहुत अच्छा था कि व्हेन ही हैज कम एज एन सब्स्टिट्यूट, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है जब कंपेयर टू जब वो लाइनअप में आया है डायरेक्टली. बट मैं कहूँगा कि काफ़ी टीम्स होंगी यूरोप में जिनके पास डेप्थ रियल मैड्रिड से ज़्यादा होगी, बट व्हेन इट कम्स टू इम्पैक्टफुल सब्स्टिट्यूशंस, रियल मैड्रिड मेरे ख्याल से इन दिस चैंपियंस लीग सीजन हैज़ बीन द बेस्ट टीम. क्योंकि अगर देखो रोड्रिगो भी चेल्सी के अगेंस्ट आया इम्पैक्टफुल, आप पीएसजी वाला मैच देखो कामाविंगा आया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सब्स्टिट्यूशंस कौन होने वाले हैं. रोड्रिगो, कामाविंगा, लुकास वेस्केस, 3 लोग हैं हमें रटे हुए. तो ये वाली बात है. और आप देख सकते हो अगर कहीं प्रेस करने की अगर बात आ रही है तो यू मे सी कामाविंगा, वेलवार्दे, मॉड्रिच का मिडफील्ड विद रोड्रिगो ऑन द राइट विंग, और वही फ्रंट थ्री जो मैंने पहले बताई थी. अगर नहीं तो फिर तो वही होगा कि क्रूज, आप अगर वी आर गोइंग टू डिफेंड डीप तो फिर क्रूज, क्योंकि टू प्ले दोज लॉन्ग बॉल्स और डिस्ट्रीब्यूट द बॉल क्विकली ट्रांजिशन पीरियड में, तो आप क्रूज को और मॉड्रिच और हमारे भाई वेलवार्दे को देखोगे एज द वो सीडीएम, जो मोस्ट लाइकली आप देखोगे कि ही विल कवर फॉर कारवाल. और रोड्रिगो भी अगर खेलता है ना, तो रोड्रिगो की भी डिफेंस रेट बहुत अच्छी है.
वो काफी बार अच्छे से ट्रैक बैक करता है। और विनीशियस जूनियर से भी मेरे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे चेल्सी की चेल्सी फर्स्ट लेग एग्जैक्टली चेल्सी फर्स्ट लेग में उस मेंडी को आप देख रहे थे क्या लेवल पे खेल रहा था, क्रिश्चियनसन नहीं है इस गेम में, जस्ट ए रिमाइंडर। नहीं बट विनीसियस फिर भी कितना ट्रैक बैक कर रहा था। इट इज समथिंग अनकैरेक्टरिस्टिक आई वुड से फॉर विनीसियस, मतलब विनीशियस it was you don't expect him to track back ऐसे करके, not against one on one versus Christensen नहीं, but generally like Vinicius also whole match. The whole match he used to not do that, मतलब इतना वो expectation नहीं था and he exceeded expectation, so वही है कि we hope to see that Vinicius वो first leg वाला जो ट्रैक बैक करता है। ऋषिकेश ग्रिलिश के बारे में याद दिलाते हुए यहाँ पर, लेकिन हाँ यहाँ क्वेश्चन था क्विकली धेनुका, आई नो अगेन मैंने बॉम्बे पेनिया की बात नहीं की अभी तक, बट आई थिंक आई एम अस्यूमिंग कि सब लोग जानते हैं अभी तक, वी हैव बीन टेलिंग लॉट्स, लेकिन होपफुली यू गाइस फॉलो बॉम्बे पेनिया एज वेल। उनका इंस्टा आईडी है नीचे, गिव देम अ फॉलो फॉर श्योर, लॉट ऑफ एक्टिविटीज। धेनुका, वुड यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? Yeah, Kolkata, the Penya is not official yet, so I don't think there is a screening, or at least that I know of. But Mumbai mein hai, so go to the Bombay Penya handle. There is a screening happening in Peninsula, so you'll get the details on the. काफी posts हैं and on a daily basis post करते हैं, तो just check the screening details from the Insta handle, Twitter handle. Yeah, absolutely. And coming soon is Chelsea Penia for everyone. Hopefully, I kind of envy that. Brilliant stuff. Like, absolutely, Rahul, thanks, bhai, always. Thanks for putting it up. Yes, like Suraj is also saying, 171 people tuning in. Please like the stream and subscribe to Almighty Blues FC. Subscribe to TCSB as well. And do give a follow to Bombay Penia. आपके पहले 2 लाइन में है डिस्क्रिप्शन के, इतना लंबा डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द गेम, यहाँ पर अगेन पीपल इन द चैट, आप बोलिए what do you think will be the main difference maker in the first leg? Like again, the fact कि पहला leg is in the Etihad, it's not there in Bernabeu. Again, it will be a plus point for Bernabeu, kind of getting that return leg in a strange sense with the semi-final. लेकिन the fact कि Man City are potentially missing players or having players not 100% fit है, जो तो हो सकता है इधर एक काउंटर पे जाए, like Real Madrid इसी टाइम से करते हैं, they kind of play the waiting game. Yeah, they can just take it to Man City for a change. Maybe I don't know. Atletico Madrid के पास जो हुआ है against Man City, they have learned now, how to kind of win ugly as well. So they have both the game as well. So very interesting रहेगा for Ancelotti what he really does. But I'll ask Jayant here. Jayant, KDB भाई, we spoke about Benzema. Fair enough, one of the best. KDB again, as a Chelsea fan, pains me to say it. Probably the signing जो मैं regret करता हूँ for Chelsea. Probably the best midfielder. I am still मैं हर चीज में बोलता हूँ, जब भी रियल मैड्रिड की बात होती है मैं बोलता हूँ यार केडीबी जैसा इंसान रियल मैड्रिड के साथ इतना स्ट्रांगली लिंक हुआ ही नहीं, which is very strange for me. लेकिन how do Real Madrid, like for sure एक बंदा रहना पड़ेगा केडीबी के पीछे, for sure. वो भी 100% नहीं है फिट by the way. For sure रहना पड़ेगा। अब ये देखो कितनी अच्छी बात है कि केडीबी 100% फिट नहीं है, क्योंकि 100% अगर वो बंदा फिट है तो ही कैन चेंज गेम्स ऑन हिज ओन। और हमने देखा है चेल्सी वाले, अगर मैन सिटी की भी बात करें भैया, कांटे वाज रनिंग बिहाइंड हिम, उसने कांटे ने टैकल दिया था, उसको भी उसने क्रॉस करके एंड देन शॉट फ्रॉम वे आउट और फिर गोल हुआ था। तो वी नो केडीबी की क्वालिटी, ही विल यू हैव टू वॉच हिज पिन पॉइंट क्रॉसिंग एज वेल, क्योंकि फ्रॉम नोवेयर वो देखेगा एंड ही विल श्योरली क्या कहते हैं give a cross to maybe a Gabriel Jesus or Sterling, whosoever is playing. और तो वो अच्छे क्रॉसेस की, क्योंकि इतने क्रॉसेस वो बंदा देता ही है, तो और अगर आप आल्बा नहीं और नाचो खेलो तो एक आप देख रहे हो एक क्रॉसेस को डील करने के लिए एक और बंदा कम है। और रियल मैड्रिड डिफेंसिवली क्रॉसेस को इतने अच्छे से डील नहीं कर पाई है, चाहे आप कॉर्नर की बात कर लो, चाहे बहुत इशू है। तो हमको केडीबी को वहां पर रोकना पड़ेगा। और केडीबी में वेलवार्दे को डाल दो यार, वेलवार्दे को बोल भाई तेरा यही काम है कि इसके पीछे रहो, इसके पीछे रहो, क्योंकि आप फर्स्ट लेग मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड एट होम रियल मैड्रिड विनिंग 1-0 78 मिनट तक, उसके बाद केडीबी कम्स, मतलब कम्स क्या, यू गिव केडीबी अ लिटिल स्पेस, क्रॉस फ्रॉम नोवेयर, गैब्रियल जीसस गोल, फिर केडीबी पेनल्टी मारता है। तो केडीबी इज केडीबी। सिटी आपका कमेंट देखो, ये मतलब could have bought Haaland just for this match. भाई आपके पास जीसस है, जीसस is with you, come on, he just scored 4 goals. City have 4 goals.
और क्या चाहिए? लालच बुरी बात है, लालच Like लालच बुरी point to बात है। prove. और हालैंड क्या किया भाई लास्ट 2 हफ्तों में, प्लीज टेल मी। तो इट्स ऑल वो है, मतलब यू नीड प्लेयर जो फिट होता है। गैब्रियल जेसस फिट्स, मेरे ख्याल से तो गैब्रियल जेसस विल स्टार्ट आफ्टर जो किया ना वीकेंड में। पहले सोच रहा होगा पेप प्रॉब्ली वो खिला देते इसको चलो एक गेम, लेकिन अभी आफ्टर 4 गोल्स आई डोंट थिंक दैट ही कैन प्रॉब्ली डू समथिंग एल्स। यहाँ पर एल कुकी, थैंक यू भाई, ऑलवेज हेल्प्स। इट विल बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। In my opinion, Ancelotti is criminally underrated. I am totally with you. He has all the tricks. Keep up the good work. Love you, Ankit. I love you too, and love you all as well. Whoever has joined 4-3 to City. So काफी City fans भी है. Not that भैया I लेकिन know. फुटबॉल क्रैक्स ने एक बहुत ही अच्छा वो पॉइंट डाला है कि अगर आपने केडीबी को मार्क कर दिया, यू हैव अनदर प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा, Bernardo Silva. वही जो कि बहुत वही तगड़ी चीज है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वही है यार, दिस इज द क्वालिटी ऑफ मैनचेस्टर सिटी, दैट इज व्हाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन यूरोप, एंड दैट इज व्हाई आई वांट रियल मैड्रिड टू बीट द बेस्ट, टू बिकम द बेस्ट। मैं तो ये कहूंगा, Absolutely. एंड यू हैव टू Yeah. यू हैव टू So Rahul, so like Dhenuka said, Bombay Penia is there, multiple cities, right, Dhenuka, and they kind of yeah arrange it. So give yeah them a follow. yeah. Please do. Bombay Pena is the one in Bombay. Similarly, there are other peñas in Tamil Okay. Nadu and Kerala and other places. So I know that I think Chennai has a screening, Coimbatore I think has some screening. So they are in the south. So just check. There is this banner of Madridismo India, and there are a few peñas associated with it. So all of those, I think many of those have screenings. I think Pune has one, if I'm not wrong. So Nathan here with a witty comment, not enough Man City fans to fill their stadiums. Oops. Let me ask the Man City fan, because I have a Man City fan in the house, one of the top Man City fans that I know of. So I'll actually put that comment. Let's see, let's do that and enjoy. But I have to ask Dhenuka again the same kind of question. Like, do you think Ancelotti he'll kind of play the defensive game, go on the counter? What is actually the right thing to do at the Etihad for you? So क्योंकि पोजेशन तो सिटी रखेगी, दैट लेट्स बी ऑनेस्ट ना, लेकिन यू कैन लाइक जैन सेड दे कैन बी हाई प्रेसिंग, और यू जस्ट वेट एंड वॉच Atletico type of game. Also there is a possibility because Real also have the players, if I'm not wrong. but if we try to do what we did in that Clasico and that Super Cup final and what we did against PSG, which we run the risk of doing when we try to think outside the box and try to control the other teams from scoring, that is how we perform, and that's not at all, that is a nightmare situation. So see, getting that first goal is going to be very crucial, very very crucial, because I think that Man City also sort of buckles sometimes under pressure. So यहाँ पे mentality का जो एक है ना, वो these are two sort of extremes, I would say, because Real Madrid will thrive under pressure, and Man City kind of buckles under pressure. So they have to keep that pressure on Man City. But to me, the most important thing is to have a rock solid defense. And ठीक है, see, because our Vinicius and Benzema will link up and will find things, and Modric will create chances. There you have that liberty to, and if you want to let them play their natural game, then you have to have zero mistakes at the back. So to me, that is most important for Madrid. I think that we have to be very very strong defensively, and then on the counter, of course, like try to score on the counter and allow them to make mistakes. I think because the complete team that they are, I think these are the only few things you can do. Jo footballing 101 mein they say, right? That is what you can expect to do. So I would still think allow them to make mistakes, press on the counter, and this thing that Jayant brought up, ये जो कोई कभी भी decide कर लेता है press करने के लिए कहीं जाके, he was talking about that. This is one theme that has been happening in Madrid. There is no like solid sort Team of pressing. even in the Sevilla, yeah, exactly, this team pressing has not been happening. So somebody out of the blue decides to press all of a sudden, and obviously that doesn't work because the other players have not gotten the memo. So we end up giving people so much space. There is like no cohesion and there is total chaos. So वो बिल्कुल नहीं चाहिए. So there has to be that clarity in thought, and to me, I think वो defense में it's going to make a huge difference. And
yeah, like not making mistakes. We have been making so many mistakes यहाँ पे. Basics like especially set pieces वगैरह से defending has been like defending 101 mistakes है ये. So these things you cannot afford against City when you won't get a lot of chances. So यहाँ पर अगेन कुछ कमेंट लेते हैं क्विकली. यार पहले तो इंसेन फुटबॉल टॉक्स बोले जयंत, तो फिर से पेला जाएगा. लेट्स सी. बिग अप टू इंसेन फुटबॉल टॉक्स भी. लेकिन फिर से क्या भाई? What is this? मतलब यार बारसा वाली मैच यार, ये बारसा फैन है जतिन भाई. ठीक है यार. टीम नॉट टू स्कोर फर्स्ट कॉज मैड्रिड विल डू अ कमबैक. ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे. कमबैक किंग्स है तो यार पहले स्कोर बंद करो. वी विल चेंज द द स्क्रिप्ट. That is what Pep's kind of tactic will be. Great tactic with just in there. Don't concede early. Yeah, as in probably Madrid का मैं होता तो यही बोलता. Ancelotti, if I was Ancelotti, because for me City they can turn it on, man. I know it was 14 in the round of 16, but they can turn it on. They can turn it on the days. Even PSG, if you remember the stage में they dominated. Yeah. वही है भैया. जैसे हमारे लिए है कि हम लोग कोई मिस्टेक्स नहीं कर सकते, वैसे सिटी के लिए भी ये बात उनको पता होगी कि दे कैन नॉट गिव रियल मैड्रिड 10 मिनट पार्ट जिसमें रियल मैड्रिड आल्सो प्लेइंग अ गुड देयर बेस्ट गेम. क्योंकि मॉड्रिच का वो एक पास अगर चेल्सी के अगेंस्ट नहीं डलता ना तो आज ये हम बात नहीं कर रहे होते. तो मतलब सिटी के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना हमारे लिए. बट यस, उनके पास क्वालिटी बहुत है और प्रीमियर लीग में और दे आर मतलब every alive in every competition. Cruising along वही वाली बात है. जबकि लिवरपूल का इतना प्रेशर है उन पे कि मतलब नेक टू नेक चल रहा है टाइटल कंपटीशन एंड दे आर लाइक वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप. और उन्होंने पहले भी ये प्रूव कर रखा है, 1 पॉइंट का गैप था एंड दे वॉन द लीग. तो हैट्स ऑफ टू पेप गार्डियोला, हैट्स ऑफ टू मैनचेस्टर सिटी. बट व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग, मैं तो एज अ रियल मैड्रिड न्यूट्रल फैन भी होता तो मैं 1% रियल मैड्रिड को हमेशा जान देता. बिकॉज़ यहाँ पर प्रॉपर बैंटर चल रहा है कमेंट्स में, देख रहा हूँ सब. मैं तो मतलब आई जस्ट एंजॉय द कमेंट्स यहाँ पर. बट अगेन पीपल, अगर बाय चांस लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए. एंड यस, इफ पीपल हैव जॉइन लेट, आज हम कर रहे हैं मैड्रिड पर्सपेक्टिव टोटल. लेकिन हाँ, आई एम द न्यूट्रल, मैं मैड्रिड फैन नहीं हूँ, जस्ट टू बी क्लियर. लेकिन एब्सोल्युटली लव यू ऑल बीइंग हियर एज आई से. लेकिन अंकित, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो ये भी पूछना है मुझे. आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, सिटी और रियल मैड्रिड? क्योंकि रियल मैड्रिड को तो आप शायद ना कर रहे हो बिकॉज़ ऑफ, देखो यार मतलब वही बिटवीन द डेविल एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग. हां, दिस इज रियल मैड्रिड यार 13 चैंपियनशिप्स यू वन इन यूरोप ना. मतलब दैट इज ह्यूज नंबर. मतलब वहां पर कब तो पहुंचेंगे, मतलब 130 साल में ही पहुंचेंगे नहीं, देयर इज अ डाउट. दैट्स हाउ रियल मैड्रिड हैज डन. ठीक है, बट सिटी बैंटर हमेशा है चेल्सी फैंस का. यू हैव नॉट वन एनीथिंग यूरोप or we have dominated as an English football for last 15 years. What we say, City fans say it's them. तो काफी मतलब it's really difficult choice. मैं बोलूँ विलारियल भाई जीत जाओ. विलारियल जीत जाओ, बेस्ट है वो. Oh my God, that is the only answer I have. Liga supremacy. लिवरपूल भी नहीं चाहूंगा. लेकिन हाँ मतलब कम ऑन, इट्स नॉट इन माय हैंड. आई विश मेरे हाथ में होता. यहाँ पर काफी लोग अभी कर रहे हैं. यस, डोंट फॉरगेट फोर्डन इज डेंजरस. लेकिन अभी भी आपने आंसर नहीं दिया कि सिटी और रियल मैड्रिड में कौन जीतेगा. आप ये आंसर. अच्छा, तो बेसिकली अच्छा ऐसा बोलते हैं. चलो विलारियल जीतने के लिए आई थिंक चैंपियंस लीग, आई थिंक इट्स बेटर इफ रियल मैड्रिड गोस इनटू द फाइनल. लेट्स पुट इट दैट वे. आज मैड्रिड फाइनल है, मैड्रिड में ज्यादा जोर चाहते हैं. सॉरी सिटी फैंस, लेकिन दैट इज व्हाट. लेकिन साथ में ये भी बोलूंगा, डिप्लोमेटिक आंसर एट इट्स बेस्ट. नहीं, आई हैव गिवन अ प्रेडिक्शन. आई हैव ऑलरेडी गिवन अ प्रेडिक्शन मेरे भाई. मेरी प्रेडिक्शन क्लियरली है कि सिटी आर गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग. आई हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट. तो again what मैं चाहूंगा मतलब क्या होगा, there are two different things, right? So I said I want Real Madrid to win because I want Villareal to win the Champions League. लेकिन I am predicting कि City will win, but again I might be wrong again. यार मारना मत पकड़ के. The fact is it's just a prediction, just a gut feel ना. Let's see. Then again yes, 11 more likes to 200 looks like. Let's get there. लेकिन स्टार्टिंग 11 में अगेन मैंने दिखाया नहीं स्टार्टिंग 11 यहाँ पर, लेकिन क्विकली देखता हूँ. अगेन पीपल आप बोलिए स्टार्टिंग 11 क्या चाहोगे आप. Lot of tactical talk हो गया, लेकिन what do you want the exact starting 11 for me to for Real Madrid? Again, assuming कि यहाँ people are fit or they are at least 90% fit to start. I am just going by reports आज, but मैं तो सोच रहा हूँ सभी fit होंगे. That is the best case scenario for Real Madrid. अगर सब fit होते, then if all are fit, Dhenuka, will this be your starting 11? Or you want to change? अरे यार चेंज करने के लिए हमारे पास है ही मतलब एक हाथ दो पोजीशन में ही लोग. सो
Yeah, this would pretty much be my thing, but I don't know. Assuming all these people are fit, I think this is what Carlo will go with. It's Yeah, his that's what tried and Carlo will do. tested. Exactly. It's his To tried predict and his 11. tested combo. Correct. Predicted Yeah, level. exactly. Because I think this 11 only kind of did the job यार last 2-3 matches में PSG के साथ come back and Chelsea के साथ Chelsea first probably leg के the लिए. difference was Valverde I think in that तो वो एक positive element it'll be unfair to drop him as much as हम tactics की बात कर रहे हैं but Jayant would you actually be brave and say that Carlo actually कुछ change करेगा he'll surprise Pep will not overthink मैं and he'll probably do that मेरे को लग रहा है कि जितने उसने अब सब्स्टिट्यूशन करने शुरू कर दिए ही माइट गो विद कामाविंगा ओवर क्रूज एंड और मतलब वेलवार्दे को आप बीच में ले आओ वैसे वैसे वेलवार्दे फॉर क्रूज और रोड्रिगो को आप वहां खिला दो सॉरी वेलवार्दे फॉर क्रूज और Okay. रोड्रिगो को आप खिलाओ क्योंकि वहां पर विंग बैक्स नहीं है उनके जो स्टार्टर है एंड वी हैव टू टेक द एडवांटेज इन दिस लाइक वी हैव टू Lekin, don't you okay think that Camavinga can, like, given how young he is and uska aggression and everything, like, नहीं don't मैं you कह रहा think हूँ he कि will? कामा नहीं ये जो पूरी लाइनअप थी इसमें आप वेलवार्दे को क्रूज की जगह ले आओ और क्रूज को बैठा के और रोड्रिगो ले आओ दैट्स इट Rodrigo ko liya. Oh, sorry. रोड्रिगो को ले आओ ऑन द राइट विंग यस Oh, sorry. I thought you were saying. यहाँ पर यार लिवरपूल फैंस गुस्से हो रहे हैं यार कम ऑन लाइक मैं हमेशा बोला यार विच इज माय नंबर वन ओपोनेंट नंबर वन जो मैं फील करता हूँ दे आर अ प्रॉपर राइवल एज मच एज आर्सेनल हम बैंटर करते हैं टॉटनहम बैंटर करते हैं चेल्सी फैंस वी डू इवन वेस्ट हैम ब्रेंटफोर्ड मतलब वेस्ट लंदन डाबी है लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज बीन लीड्स एंड लिवरपूल फॉर मी मैं बोला उसमें कुछ दो राय नहीं है राइवल है तो राइवल है भाई लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आई क्रॉस एनी लाइन डोंट वरी यू नो व्हाट आई कवर कंटेंट लेकिन एब्सोल्युटली भाई मतलब we want a good match and we want a good final, good semi-final first. Lekin that's something that we are hoping for. What's your score prediction, Dhenuka? And again, people in the chat, काफी score predictions देख रहा हूँ. First इस पर ही आ जाते हैं. Come on, Man City, Real Madrid, first leg. Dhenuka put in a score and who'll score as well. देखते हैं कौन करेगा. Oh, ये नया twist आ गया ये time. I think 2-2. I'll go for a 2-2 draw because I'm a Madrid fan. And that's a good result. नहीं? Going back to Bernabeu, I think that's a good result for sure. Fair enough. What about Jayant? By the time Dhenuka thinks who's scoring, I'm not going to miss that because this will be clipped. Jayant, please. I will go with a 2-1 Real Madrid win because I'm an optimistic Real Madrid fan. क्या बात है. 2-1 क्योंकि and scorer will be Rodrigo because he's in a red hot form और बेंजेमा भैया तो अगर बेंजे बाप अगर है तो हम और किसी को बस नहीं जाना होता तो बेंजे बाप एंड Rodrigo goals for sure. ये De Bruyne coming for Courtois यार this has to be the story actually. ये headline तो ये है. This is the main headline. And Yeah, we all, I think Look, someone had Rakim said is this even during the Chelsea thing, right? Like if Real do go through, probably they wanted to see KDB versus Courtois. exactly. मतलब Real Madrid has surely got all the toughest opponents in the Absolutely. knockout round. Yeah. Absolutely. And if they win it, bhai sahab, the best Yeah. run by Real Madrid. I would the agree. Best. I would agree. No easy With this- passes at all ये time. If with- it doesn't. With the squad I'm we have, loving the अगर हम comments. उसको भी ये देखो यार कमेंट्स को देखो यार मतलब नोइंग पेप जो किया था ना आफ्टर सिटी विनिंग लास्ट सीजन in the league and then kind of did it too early final के पहले Don Carlo will be handing out the cigars that will be pretty cool अगर सच में होता तो Shantanu is like even as a Madridista I'll be happy Villareal can make the impossible into possible okay only if we get knocked out in semi good evening that's only, a fair yes. call yes yeah Shantanu bhai Ala Shantanu Madrid has the right idea. वही. Yeah, Rodrigo has to play. मतलब वही है पॉपुलर ओपिनियन यही बोल रही है कि Rodrigo has to play. मतलब जो मैडनेस किया है by the way again that pass going back to that pass which kind of made that second leg into a leg and we kind of got eliminated. Modric's pass. मतलब Dhenuka just putting a question here. I know we've been talking about KDB as well. Like in Modric, would you say this season that he's at par with KDB? Like where would you place him in terms of the season that he's had for Madrid this season again? Coming back from what last season में थोड़ा missing था, right? Okay, मेरा थोड़ा bias है because I'm a Luka I know. Modric fan. So so I would absolutely I think he's criminally underrated to be very honest क्योंकि बहुत ही times ऐसे होता even last season right when he was not injured he was one of the few people I think last season में who did
I think the only person who did not get injured last season. Okay. Everyone else, Kroos had multiple injuries. Everybody else was injured. He was putting in performances day in and day out. But last season, the vibe was something completely different and एकदम अजीब season ही था. So वो Modric even last season has bailed us out multiple times. And the fact that even at this age, right? Okay, and Zidane used to bench Modric quite a lot because he used to prefer playing Valverde. And I still remember when Modric came back once, and it was like very late in the game. He was playing like he was a young kid who had a point to prove that I need to get back on the team. उसमें अभी भी वो zeal है, that zest है. If he loses a ball in the 75th minute, 80th minute, Yeah. he will still try his level best to win it back. And he will play like he has the soul of like a 20-year-old. That is how much, like, he will give it his all, and he's gifted technically as well. And like they call him the magician, right? He is gifted technically, but more than that, I think his dedication and his and I really think that Camavinga is also very, very young and very gifted, but he needs to get that thing like Modric, like, win, how to win the ball back, like be like tenacious on the ball and get it back. Ye dedication, ye age mein, I would say 100% Modric has had a phenomenal season, and to me, the best midfielder. You can kind of thank Chelsea also for that. Back in the day, it was if not for Daniel Levy, वो एक Chelsea player होता आज. Okay. Again, ifs and buts, we can all talk about it. लेकिन he actually wanted to come to Chelsea. He was on And Roman's I'm yacht. forever grateful. I'm not very grateful to Mourinho for a lot of things, but this one I'm eternally grateful Yeah. for. Mourinho, man, मतलब he did it. मुझे हमेशा लगता है यार, Mourinho when he went to Real Madrid ना, he kind of got all the big name players who kind of fitted the puzzle. For Chelsea always एक था, maybe because वो English league में we have not been that dominant in terms of the way we play, so he always went defensive. For example, he gave away Kevin De Bruyne because of whatever may be the reason, and he kept Oscar. Whereas in Real Madrid he had Prime Ozil. So that was something that I think he did a lot. Again, along with Ancelotti, I feel that Mourinho, for whatever may be the reason, doesn't get the plaudits for what he did even at Real Madrid. Like, I know it was Pep and his best team at that era, SEC, but he was the one who actually overtook that. And that is not spoken about enough as well. Well, that's something that I always felt, maybe a Mourinho stan who sleep or like, I think that's the reality of it, right? But again, yeah, Jayant, please. अंकित भैया, मतलब from being titled as the worst transfer of the season to winning the Ballon d'Or to putting next level performances day in day out at the age of 36, that's Modric for you. Yeah. मतलब he's the best midfielder for me. और मतलब आप देखो, he has changed the games, he has scored goals this Absolutely. season, he has assisted, he has defended. आप Athletic Bilbao का कुछ 60th मिनट में some player nutmegged him at the half line, वो बॉक्स तक उसका पीछा करते गया, जबकि we were winning and वो he could have like simply Easily left it. step और back, हाँ, जो और फिर उसके बाद उसने वो बॉल मतलब रिट्रीव करी, एंड देन उसके बाद फिर मतलब आप नेमार वाला रन देख लो, नेमार, वेराटी और पता नहीं उनको उसने लगा के उसके बाद ही असिस्टेड द गोल. मतलब गूज बम्स आ रहे हैं मुझे अभी, बिकॉज दैट्स द प्लेयर एंड दैट्स कैलिबर दिखा रहा है. और उस सबसे बड़ा, ये कितने भी ट्रांसफर हो जाए, चुआमिनी, एम्बापे, रूडिगर, बट जो सबसे बड़ी खुशी देती है वो इस चीज की कि रियल मैड्रिड हैव एक्सटेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लुका मॉड्रिच. Yeah, मतलब I am a huge Kaka fan. We all probably know most of them who kind of watch the channel a lot. मुझे याद है, I think that was probably the season हम सोचे थे Real Madrid will be the next thing. So, but for me, that Modric transfer was actually the one which kind of changed the way you all play, right? As in, obviously, Kovacic did not get in the 11. Imagine, he was obviously not at his prime then, लेकिन फिर भी he was there. मतलब he had an element to him. तो काफी that is saying a lot, right? Absolutely. 2-1, let's see. But एक और match है obviously, मतलब we'll quickly talk about it. हम by the way we are live for that match. I think maybe few hours पहले Wednesday को we will have a Liverpool panel in the house, so we'll be discussing that in detail. जैसे आज हम Madrid की discuss कर रहे हैं, कल हम Man City के बारे में discuss करेंगे. लेकिन Liverpool Villareal पहले, I think first leg is in Liverpool. Villareal did whatever they did against Bayern Munich. पता नहीं कैसे किया अभी तक, मैं तो I'm like in shock almost. But Dhenuka, again, looking at Villareal so much and Liverpool as well, मतलब they are in the league. कल भी मतलब they won it, that's how they are. They have that winning mentality.
what percentage of chance would you give Villareal? I know not much, लेकिन what percentage of chance? No, I think Liverpool is in like some other form only this season, and they are as sort of unbelievable as it is. They have been picking up form towards the, I think, second half of the season, where to make the title race so close with Man City, and they have not dropped any points. I think this in the after the winter. In this particular, in the second half of the season, right? In the Yeah, Premier League, they have back to not back to dropped. back. मतलब एक ही चैंपियंस लीग में इंटर मिलान के साथ हारे थे and हाँ, dropping against, you can say dropping against Benfica when the tie was won. हाँ, Draw हाँ, हुआ नहीं, था, right? yeah, right. No, the league I was talking about, like the day in and day out, where they're Or playing. Man City was the only game from what I Right, remember. right. 2 That points. was a draw. Right, right. So, yeah. So that I think that of late, उनका जो run रहा है, they are on some other level, and they can give टक्कर, like their squad depth. Again, I keep harping on about that because they have so many options and they can play so many combinations now. They हर पोजीशन में उनके पास they have options यार, so it's very difficult for Villarreal to beat them in the kind of form they are in. So I wouldn't be too optimistic about Yeah, Villarreal's yeah. chances, By because by Bayern the was way, also not the Bayern from, you know, they didn't look like the Bayern of the UCL and the they were ties error that prone they had. basically. They were much They're more very error very prone. error prone. There And were a lot they of mistakes they made. they have to thank their क्या कहते हैं बैकहैंड That टीम is, जो भी है जिन्होंने लुइस डियाज को साइन करा है. oh man, That signing that of the has that has been the changing point भाई. उसके बाद से तो They have to thank Spurs मतलब भाई. Spurs they ने कर have दिया to. था, उसका वैल्यू हाँ कौन Spurs ने नहीं, किया है. वो तो मतलब हद ही होगी थी वो जो ट्रांसफर था. और फिर क्या कहते हैं इन्होंने लुइस डियाज को साइन करा और मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक कि एक टाइम आएगा जब माने भी नहीं होगा टीम में, जब सलाह भी नहीं होगा टीम में, क्योंकि वो एफकॉन खेलने होंगे, तो क्या होगा. उसका सोल्यूशन लेके आए और उसने जो किया और क्या हुआ. हैट्स ऑफ टू लुइस डियाज, जोटा और जो बाकी के टीम्स हैं, मीना मीनू सब एक टाइम पे ये फ्रंट थ्री भी खेली है एंड दे स्टिल won the match. So you Yeah, have to give it to बिल्कुल Jurgen Klopp बिल्कुल and the भाई. players. 100 माने is 100. finding his form back at the right time. मतलब मैं बोल रही हूँ towards माने the end of the season ये सारे मतलब जोश में कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं. Who has been on some other trip since playing for the national team. They all thought मतलब it अगेन would माने be other way around. लीग में जो कि ना पोकिंग एंड ऑल दैट वो तो भाई नहीं चलेगा भाई. यूसीएल में नहीं चलेगा. डोंट पोक द आई एंड ऑल दैट. लेकिन हाँ, वॉच अलोंग शांतनु. और बाय द वे राहुल भी पूछ रहे थे. यस, बेसिकली तो कल क्या है, Real सुबह यू विल गेट अ TCS वीडियो भी तो quickly. TCSB पर भी है and we are also doing watch along कल. So please do join. We are doing the watch along, so definitely हम करने वाले हैं such a big game. लेकिन not just that, like I said, we will have a City perspective. So City fans don't get disappointed. आप बहुत बार बोलते हो यार City पैनल को नहीं लाते हो, City पैनल को नहीं लाते हो. हम शुरू कर दिए हैं रिसेंटली. आप देखो तो काफी सिटी पैनल, मैन सिटी फैंस भी आ रहे हैं. Yes, they do exist. That's real. लेकिन हाँ, we will get a video कल सुबह. Trust me, you have to wait for the video because that will be something else. Lekin, of course, watch along and we will be doing the Liverpool Villareal on Wednesday as well, and TCSB भी check करना भाई please सब लोग. But तो क्या score prediction क्या रहा आप लोग का Liverpool Villareal का, जयंत? फर्स्ट होम क्या फर्स्ट लिवरपूल के होम Liverpool पे. में. Anfield. I hope it's a 1-1 for Villareal. I hope it's a 1-1. La Liga fan talking here, definitely. I hope. देखो पता है सूरज भाई होता तो मेरा भाई होता तो वो कहता 3-1 4-1 और ये, but I will say 1-1. Good evening friends, good evening. सूरज भाई है बैकग्राउंड में. इंटरेस्टिंग. या यहीं पर है सूरज. चलो हाय सूरज. यस यस एब्सोल्युटली प्लीज डू जॉइन. और धेनुका, जस्ट स्कोर प्रेडिक्शन फॉर दैट. I would actually say 3-1. चलो कोई नहीं, देखते हैं. Yeah, by the way, we will have a prediction league going, so we are having a lot of predictions. So Liverpool Villarreal people in the chat, do comment what do you think will be happening in that. Especially a lot of La Liga fans हैं, मुझे पता है, in the एक combined 11 भी बना लेते सिटी रियल का तो मजा. वही करने वाला अभी. Quickly we are going to do that. If you guys have a few minutes, can we do that, Dhenuka? We'll do a quick Okay, yeah. So we'll just do a quick combined 11 यहाँ पर. Again, people in the chat, I would love for you all to participate. यहाँ पर होने वाला है मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड कंबाइंड 11, राइट? और वही बेसिकली आई वाज वेटिंग फॉर पीपल टू गेट इन. तो 4-3-3 दोनों टीम्स 4-3-3 जाते हैं, दैट वाज आई एम अज्यूमिंग. तो 4-3-3 इज व्हाट आई एम गोइंग विद. गोलकीपर एडिसन की काफी कमेंट्स आ रहे थे.
धेनुका वोट एडिसन या कोटवा? Courtois. Come on. Courtois. This is Come a on, no-brainer. Courtois. Come on, this is no brainer. I'm a Chelsea fan, remember? And I Yeah, want you're- Andres. आप बोलो Sorry. देने को मार दो। नहीं उसको तो मैं कह रहा मतलब था- बेंजेमा अगर एक गोल निकाल दे फिर से एक और बिल्कुल मैं सही कह रहा था कि अच्छा, एडरसन by the way, जो chat कर का रहा भी- था लिवरपूल के अगेंस्ट Exactly. वो एक बार करे प्लीज, वो बेंजेमा बताएगा कैसे मारना। चैट का भी Same मैं time. सुनने वाला हूँ, मैं इग्नोर नहीं करने वाला हूँ। चैट भी जो बोलने वाली है, तो कोटवा एडिसन दो बार एक ही अकाउंट से लिखा, ये तो आप गलत पढ़ रहे हो भैया, एक से अकाउंट से तो आप नहीं भाई, बहुत एडिसन आ रहे हैं। आई एम नॉट, मतलब मैं कोई बायस नहीं कर रहा Because I think there are City fans in the there are Chelsea fans also in the chat. नो, मैं गारंटी बोल रहा हूं, मैं ढूंढ good point. कौन है भाई चेल्सी फैंस, प्लीज पुट अप योर हैंड यार। एक मतलब गिव अ थम्स अप इन द I am just joking. पीयूष पाटिल इज एडिसन एवन अ शॉट स्टॉपर? हाँ, सूरज हैज अ पॉइंट यहाँ पर, लेकिन भाई he doesn't need to stop, that's the whole point, like he is a person who kind of commands that. Yeah, No, as in Courtois is keeper. our second. If you exclude Benzema, for me the player of the season for Real is Courtois. Modric and Courtois साथ में। Modric and Courtois. Yeah, I think that kind of nails it for Courtois. I think the fact that Real Madrid, it's been so important. Without I think Courtois, reality is whether I like it or not, नहीं पहुंचती Real Madrid यहाँ पर। भाई आप चेल्सी वाला मैच ही देख लो, चेल्सी वाले मैच में भी he made a lot of saves. Exactly. चलो ये क्या शेयर कर दिया मैं। By the way, I am talking about left back now. Next is left back. Left back, Jayant. कंसेलो ही है ना उनका, कंसेलो ही है ना। तो Cancelo नहीं करेंगे Cancelo क्योंकि वो नहीं है। एलिजिबल नहीं है, तो लेट्स नॉट हैव Cancelo. I'll give you that. फिर तो मैं मेंडी रखूंगा, Okay. अगर कंसेलो है तो कंसेलो, अगर नहीं अवेलेबल है क्योंकि वॉकर भी अवेलेबल नहीं है और कोई भी नहीं, तो मैं तो मेंडी रखूंगा। चैट लेफ्ट बैक बोलिए। लेफ्ट बैक फॉर मी, लेफ्ट बैक कैंसलो होता अगर वो बेसिकली अवेलेबल होता, क्योंकि नहीं है फॉर दिस लेग अभी कंबाइंड 11 में वी आर नॉट पुटिंग हिम, सो धेनुका विल एग्री, आई एम अज्यूमिंग। लेट्स गो विद मेंडी। So we- if Cancelo is not there. चलो we'll put Mendy, and of course it's not going to be Edward Mendy but Ferland Mendy। लेकिन हाँ, राइट बैक वहां पर we all know, so कोई सीक्रेट नहीं है, Real Madrid are needing a right back who's more reliable. As much as Carvajal is brilliant, I would say that Walker walks in, assuming Walker is fit. Fitness की fit? कोई Yeah, okay. surety नहीं है, तो Walker Hey, walks in मुझे right. ना honestly लगता है they are bantering us, man. How all of these injuries are coming pretty much at the last minute. कहाँ से आ रहा है? बहुत सारे extra injuries. So I don't even शिनचेंको भी लिखा है, आशिन शिनचेंको। मजे ले रहे हैं क्योंकि रियल मैड्रिड का लोगो लगा हुआ है, पक्के मजे ले रहे हैं वैसे। अरे नहीं मजे नहीं जैन, तो यस लास्ट सीजन के फाइनल में ही वाज काइंड ऑफ द प्लेयर जो ब्लेम किया गया था अनफेयरली इन माय ओपिनियन, बट आई थिंक दिस सीजन ही हार्डली प्लेड, और वीकेंड में भाई वो क्या, ही लिटरली सेव्ड कैंसेलो's ass. That's what he did. Zinchenko, he covered, शिनचेंको ने पीएसजी वाले मैच में बहुत तगड़ा खेला पिछले सीजन, तो वो तो है जिंचेंको तो नाइस प्लेयर। तो राइट बैक अगेन आई थिंक जॉन स्टोन्स इज राइट बैक, कम ऑन भाई, मतलब वो सिटी के लिए भी राइट बैक जब स्टार्ट करता है आई एम लिटिल डाउटफुल टू बी ऑनेस्ट। वॉकर मैन, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड राइट बैक्स फॉर वॉकर। राइट बैक कर दो Walker, if he's Walker है तो Walker। वॉकर लॉक किया जाए, मतलब वही अभी तक 100% श्योर नहीं कि इज अनफिट, सो दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग। सेंटर बैक लापोर्ट बहुत लोग बोल रहे हैं, डियास एंड मिलिटाओ इन सेंटर बैक भी बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से तो I would agree with that. क्या डियास एंड मैं कर दो, यस डियास एंड मिलिटाओ। अरे सीरियसली कम ऑन मैन, ओके चलो डियास हैज बीन वेरी गुड, लेकिन सीजन से देखे तो फॉर्म में देखे तो लापोर्ट हैज आर्गुएबली बीन बेटर, नहीं जस्ट दिस सीजन। अगर इस सीजन की बात करो तो वही है 19-20 19-20 का फर्क है। I won't say लेकिन वो अलावा also has had a good season, but Militao man, he commands your center half proper he's a Somebody has हाँ, तो written वही है। Harry Maguire. भैया फिर तो मैं यही कहता हूँ कि आप अल्बा मिलिटाओ डाल दो, क्योंकि ना इट्स वेरी टफ टू चूज बिटवीन बोथ। लेकिन Alaba अच्छा fit है, assuming okay. तो भैया वो डियास डाल दो, मिलिटाओ डियास डाल दो, सब खुश है, हम भी खुश। So इट्स नहीं वेरी वैसे कुछ नहीं है यार, कोई डिप्लोमेसी नहीं यहाँ पर, या फन, इट्स नॉट, वी आर नॉट सेलेक्टिंग द टीम फॉर द फाइनल ना, इट्स लिटरली दैट वी आर नीडिंग दैट, ओके वी नीड पीपल हु रियली डिजर्व। तो डियास, बट हाँ फेयर इनफ, एक सिटी की जो डिफेंस है ना, ब्रिलियंट डिफेंस, स्पेशली चैंपियंस लीग में अलग ही लेवल हुई है, दैट्स व्हाई पीपल वी हैव पुट दिस। अगेन पीपल मेंशन करिए इफ यू डिसएग्री। मिडफील्ड में क्विकली आ जाते हैं यहाँ पर, होपफुली वी विल नॉट हैव मच डिबेट। रॉड्री वॉक्स इन,
Over Rodri, Casemiro better KDB, season. Modric. Yeah. Rodri, Okay. KDB के Modric. I think. Okay. I think ये जयंत ने बोल दिया है. Agreed. What about you, Agreed. Dhenuka? Agreed. Agreed. Again, people in midfield, people in the comments, बोलिए सब लोग. For me, I agree 100% with Jayant. यहाँ Rodri मेरे लिए has been one of the probably the best defensive midfielder that there can be, right? So De Bruyne को यहाँ डाल देते हैं. And then we'll have here. What about Bernardo Silva? Modric को कैसे बाहर रख सकते हैं आप बोलोगे? अब वही है उन ऐसे तो मतलब वही है कि क्वालिटी तो बहुत है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते. What midfield is the most difficult, to be honest. Exactly. लेकिन right wing में आप राइट डालोगे विंग पे Bernardo Silva, राइट विंग पे Bernardo Silva डाल दो और how आप is that? Then you can Benzema- work your way around that, and then Benzema is. ये Bernardo Mahrez- Silva को ना खिलाना ना हमें भी बुरा लग रहा है. I don't know why. But तो अच्छा. लेकिन मारेज फिर का आगे जाके- चैंपियंस लीग में अलग ही लेवल रहा है देनुका. मारेज in the Champions League. Mahrez हाँ रे हाँ. But I think probably I myself will go Silva. I don't know chat आप बोलिए. I am putting Silva for now unless the chat tells me otherwise. Striker Benzema यार. If anyone is putting someone else यार अभी यार बोलता हूँ यार. Come on. We'll start the cricket stream अभी. नहीं तो नहीं. Benzema तो भाई होना चाहिए. Left winger Vinicius Junior या Foden. Benzema भैया I come would say on, Vinicius. come on इस सीजन तो come on है. Left I wing would पे say Vinicius. Also मतलब because कोई तो it बोल is रहा है Vinny and Vinicius. Benz. Yeah, Vinicius Ballon d'Or वो थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन I agree. Vinicius has been one of the best wingers in Europe. Period. You know that is the reality of it. और Christensen will be the first one to say that. He's like नहीं Vinicius था भाई कैसे मैं कर सकता था उसको defend. तो वही बोलेगा तो यार we have our team ready. We have a team ready again. So please People comment rate करिए. this team. Rate this team. Wow, this team is like going to win the Champions League. इतना मैं बोलता हूँ. ये Okay, whom are you predicting? Ankit, I think just while I was asking, I predict this team to win the Champions League. Put it that way. मतलब लेकिन इसमें Villareal एक again. Captain Real कौन Madrid होगा? players dominating. 6 Real Madrid players, 5. So me and Dhenuka ma'am did a very nice job. You know what? Okay, this is the interesting We part. don't have any city नहीं, representation. disclaimer. People, Dhenuka, Jayant, जो भी Real Madrid fans in the chat, just to let you know, मैं as it is, मैं change नहीं करने वाला. Trust me, I'm going to take this as it is to the Man City fan that I'm going to stream with as well. ठीक है? And I'm going to take his comments and then I'll come back to you. ठीक है? मैं DM करने वाला हूँ. देखते हैं मतलब क्या होता है. And then we'll see. You know, whoever is the better performer on the day, and then we'll come back to this in the second leg. हाँ, see वो injuries के चक्कर में तो एक हद पोजीशन निकल गया, right? So you never know. That also plays a role. Like the Cancelo नहीं है उनके पास, and then we don't know if wait, हाँ, anyway. So देखते हैं what comments we get from City. बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे भाई. बहुत डिफिकल्ट था ये. मैंने क्विकली लिया by the way votes in the chat and by the votes in the panel. Real Madrid fans, we did a great job. Yes, we did a great job. And we'll come back to that. हम बात करेंगे. मैं बोल रहा हूँ ना as it is मैं लेने वाला हूँ. By the way, do check out that City video because trust me, there will be a lot of comments वहाँ पर आने वाले. Because this has been proper chosen. It's not like just lottery नहीं लगाया. लेकिन हाँ. Again, thanks a lot, people. I know 1.5 घंटे हो गए. Lot of kind of comments ले लिए मैंने. Quick questions कर लेते because lot of people asked a few questions यहाँ पर. Well, Bundesliga का यार, by the way, something has to change. Quickly, मैं बोलना चाहता हूँ Bundesliga something has to change quickly. Certainly they need the money. Big investors यार देखो Bundesliga में. I don't like Bundesliga being so dominant by Bayern Munich for sure. And Serge Gnabry नहीं आने वाला भाई, नहीं आने वाले. नहीं, I think Bayern Munich they might lose Lewandowski for real, but I don't think Serge Gnabry will go anywhere. And यहाँ पर is Carlo on the same level with Sir Alex Ferguson? No man, come on. Yeah, I don't agree with. No is the answer for me. Dhenuka, I'll ask you, having seen both in the prime. भैया एक और कंट्रोवर्सी की मैनेजर कौन होगा इस टीम का, पेप या फिर कार्लो? हाँ उस पर ही आएंगे, उस पर. That is the end part of the stream. Don't worry about it. वो क्वेश्चन तो अभी बाकी है. लेकिन हाँ Dhenuka, quickly, what do you think about this comment? See, the thing is with Sir Alex, it's one team, right? It's like saying Sir Alex for United and
who do you say what Klopp is to Liverpool now. They are associated with that team. They kind of, they are like a one team manager. So it is very easy to sort of slot them as a legend for that team because kitne saal, matlab you also need to look at that kind of. Whereas with Carlo, it's very different. He has achieved that with different teams. So what are you looking for, right? So on that level, I would say it's not easy to pull this off. Like winning the league over so many years with so many different teams, it can't be such a thing as luck hai mil gaya bani banai team mil gayi. No, because he can't. You can't prove him that way. So I think they're two completely different cases. No, you can't compare a Sir Absolutely. Alex for United and the kind of legend he is Context. with the kind of manager legend that Carlo is. I think they're both legends in their own right, and I don't think it's a fair comparison. And for sure, like Carlo is a legend for sure. It's not. These things are not. It's an achievement. It's not easy to do this. Win in every single league that you have managed. Yeah. Hats off. लेकिन जयंत को ही पूछते हैं ना, by the way यार, people we are just what maybe 19 likes away from 250 likes. Let's get us to 250 likes. और जो भी देख रहा है TCSB को मत भूलना सब्सक्राइब करने के लिए, and us as well अगर आपने by chance सब्सक्राइब नहीं किया, and do give a follow to Bombay Penia. The Insta ID is right in the description first line, right? तो quickly Jayant, you told about manager combined team जो हमने बनाया है. Who's your fair pick, to be very honest? Because it's the Champions League, I will go with Ancelotti. Yeah, Because I expected that. Ancelotti was He's done that, so he kind of commanded. I would agree because I think this team is also very like suited for Ancelotti, and I think I would agree with that pick based on this team also. Yeah, Tarak, by the way, I understand in terms of tactics, but I don't think. Again, I have a different opinion. I don't think there's any manager in the world who's Sir Alex Ferguson's level, and I am a proper rival. Trust me on that. मैं बोल रहा हूँ खुद. मेरे ख्याल से ना तो कभी था ना तो कभी होगा. That's just me. As much as I love Carlo, and I love Carlo, that's a fact. And I love Mourinho as well. But again, I'm saying that. And Pep, brilliant. And in terms of brilliance, he is there. But I would go with Jayant here because and Dhenuka as well, because of the fact that Ancelotti has done that in the Champions League or comebacks जो किए, we have to give down to what he's kind of motivated them. That's got to be something. Captain Dhenuka, probably Benzema. He's captain material, right? Yes, he is our captain. So yes. अरे कैप्टन कोच दोनों यार, ये तो रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रही है. नहीं भैया, कहाँ क्या कुछ भी तो नहीं. क्या है? अच्छा नहीं यार, अगर कैंसिल होता तो it would have been equal, right? नहीं, absolutely. नहीं, B-Tex, by the way, I'm looking at the chat as well. Certainly I'm looking. मतलब मैं publish नहीं कर रहा हूँ कैप्टन और कोच. ये टीम तो publish होगी based on the chat. And जैसे मैंने बोला, मैं लेने वाला हूँ opinion of the City fan as well who's coming on. Check out my video tomorrow morning. आपको मिलेगा certainly. Don't worry about it. यही टीम के साथ जाने वाला हूँ मैं. लेकिन absolutely brilliant stream. Any last words, Dhenuka? Nothing. I'm a nervous wreck as usual before all Real games because you never know which Real Madrid comes out playing वहाँ पे उस दिन. So, but I believe if there is a team that can pull off this thing, the most interesting thing for me is this mentality monsters wala thing, because you have two very different kind of teams that are going to play वहाँ पे, and given that it is an away game, let's see, because no one expected Real to pull what they did against Chelsea in the first leg. So if they can pull off another happy surprise like that, nothing like it. So very excited. So yes, big shout out again to Bombay Penia. Hopefully people give a follow to them. Or Jayant, last word for you. वही है, difficult match. So let's suffer together and kill them on transitions. ये suffer मत बोल यार, like every time Ancelotti says this. He makes us suffer. नहीं. We have to defend. वो जो ये टॉटनहैम ने टेम्पलेट दिखा के 2 बार हराया ना मैन सिटी को, बस वो वीडियो देख लेना और वो मैच में कॉपी पेस्ट कर देना, will win. Defend well. Interesting. But again, great having you guys. Hopefully हम second leg में वापस बात करेंगे. Both to take over and looking forward to the game, and we are looking forward to the other game as well, Liverpool on Wednesday. Okay, interesting.
That's an interesting one, certainly. So let's end the stream on that. Again, people, do join us for watch along. Do check out TCSB, and we'll be back again with the City point of view tomorrow morning. Till next time, take care. All the best, Dhenuka. All the best, Jayant, for the game. Looking forward as neutral Mito. And we'll be Thanks. back. Don't worry. Champions of Europe will be back as well. And don't worry about that, Chelsea fans. We'll be there. You know. It's just a phase. We'll get there. Take care, guys. Thanks for Hala having us Madrid. here. Good fun. Hala Madrid. Hala Madrid. Same here.